मम्मी मम्मी सो गई क्या? मॉर्टिन जला। साला अपडेट कौन सी का है भाई? ड्रैगन स्पाइन। चलो भाई ड्रैगन स्पाइन।
So this is the other Durin, huh? Other during? If this had been the dragon that Oh. ended up being revived in Mondstadt, there's no telling what kind of calamity that people would have had to endure. Yo GX bro, what's up? क्या हुआ भाई, दिल टूट गया क्या तुम्हारा? So, if you think about it like that, Durin's actually a hero. No, I'm just a little envious, that's all. Not everyone gets a chance to be a hero. Actually, most of the credit belongs to Albedo. Then again, barely anyone even remembers you at this point. So I guess there's not much left to envy. You... Oh! Ah, so you three still remember Durin. Looks like the memory loss hasn't spread to close friends. Yo. Yet. I guess that means my memory of you must still be White complete horse as well. adapter और कोलम्बिना दोनों पुल करना है. Adapter adapters और कोलम्बिना दोनों पुल करना है. फार्मिंग करो फिर निकालो. GX ट्रेन का हार्ट ब्रेक कर दिया. बताओ भाई, दिल टूट गया शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया. यो मारा भाई, what's up? Albedo. ऐसे काय बोला भाई नाम इसका? You're finally here! Oh, boy, do we have a whole pile of questions for you! Oh, you're here too. I think I've pieced together some of what happened to him. But All what's your messed take up? on things? क्या हो गया भाई? पुल कर दिए का तुम पीबी का वेपन पे? कर दिया ना गलती. Master Jean filled me in on what happened, and I've got a few theories. But let's get on the same page first. काम पर ही हूँ और डैम. भाई इसका हरकत देख के डोरिन पुल नहीं करेंगे. Master Jean filled me on what happened. I got a few theories. Extra intel with Albedo. Well, physically, he's doing fine. His body is holding the abyssal power at bay. And there's nothing Wuwa का whatsoever to स्टोरी मुझे indicate any अच्छा risk क्यों of नहीं लग रहा? collapse. क्या पता तुम कहीं सही राह पे होगे, इसीलिए तुमको अच्छा नहीं लग रहा. क्योंकि अच्छा नहीं है. So, from an alchemy point of view, there's nothing wrong with him? The issue isn't so much that the abyssal power within him has gotten out of control. It's that the connection between his will and body is fading. If he ends up losing his conscious will, his body will fall back on its biological instincts. And that's when the abyssal power within it will take Wuwa का over. तुम कौन स्टोरी पे हो अभी? रीना सीता में हो? This book mentioned a witches' gathering. It seems like quite a few of these witches got themselves involved in Durin's case. Which brings me to my theory. Bringing fairy tale Durin into this world to replace the Durin on Dragonspine means using one Durin's fate to overwrite the others. But the power of alchemy alone would not be enough to pull off such a feat. स्पॉइलर क्या मिला? सोर कीपर का स्टोरी शुरू किया. उस समय उतना अच्छा स्टोरी नहीं था कुछ. उस समय प्लॉट रिलेटेड कुछ नहीं था. प्लॉट वगैरह थोड़ा बहुत आया. मतलब अब बोलेंगे कि अगर वुवा का प्लॉट के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ है तो रीना सीता में हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ उतना. तो अभी तुमको उतना कुछ नहीं मिलेगा प्लॉट रिलेटेड. यो गॉड वो सब अभी भी नहीं है थोड़ा बहुत है इधर उधर छिड़का हुआ है. कहीं मतलब डिटेल में एड्रेस नहीं है कुछ. यो गॉड वो सब. It would have required the combined use of Miss Barbeloff's astrology, my teacher's alchemy, and Aunt Alice's magic. After learning of Miss Barbeloff's prophecy,
Durin and I finally came up with a way to settle the Dragon Spine Durin problem for good. अभी वनीला चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं आया। वनीला तो शुरू से था भाई, लास्ट में ही कुछ हो सकता है अच्छा। देखो हम एक्सपेक्ट करें लहाई रॉय में कुछ बताएगा। लहाई रॉय में तो फिर उसका स्कूल आर्क है ना, पता चलेगा कुछ। लहाई रॉय आ रहा है ना, उसमें मालूम चलना चाहिए भाई। वो उसका पास्ट आर्क के बारे में है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ खैर अपने को क्या, अपने को तो फ्लर दलीस से मतलब है। फ्लर दलीस उसी से मतलब है भाई। एक हमको लहाई रॉय में भी चाहिए फ्लर दलीस इक्विवेलेंट, ताकि फिर लहाई रॉय में भी हमको उसी से मतलब रहे। After learning of Miss Barbara's powers of Durin, I finally came up with a way to settle the Dragon's Spine Durin problem for good. And I took care of the alchemy side of things, which, looking back on it, seems to have been a part of their plan all along. So now, there's only one thing missing. Magic. The magic. As for the fate theory our friend in the hat just Wuwa mentioned, में कितना पुल करना पड़ता है एक 5 स्टार के लिए? अगर किस्मत खराब रहेगा तो नहीं, पीटी पूछ रहे हो? पीटी तो 80 का है। पीटी 80 का है भाई। यो गॉड बाय, गॉड बाय को तो हेलो बोल दिया था। और वेपन मैर गारंटीड है इसका, लेकिन हर कैरेक्टर का वेपन निकालने जाओगे तो अकाउंट तुम्हारा खत्म। सब कैरेक्टर का वेपन निकालने मत जाना। वेपन उसी का निकालना जिसका लाइक बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, इसके बिना ये टट्टी है, उसी का निकालना वेपन, न तो फिर गया का। और द फेट थ्योरी ऑफ I had just mentioned. I still can't figure out how any kind of magic could possibly influence the fate of Tevat. But I'm certain that the answer lies within this book. न्यू अपडेट कब आएगा? किस में? वुआ में। वुआ में सेकंड हाफ आने वाला है 3 दिन में। 3 दिन में सेकंड हाफ आएगा, कैंट्रेला आएगी और फुलोवा आएगी। और नेक्स्ट पैच वुआ का 24 तारीख को आएगा। 24 तारीख जो है ना, 24 दिसंबर को नेक्स्ट पैच आएगा वुआ का। गेंशिन जनरली जो डीपीएस है तुम्हारा उसी का वेपन, हाँ जो डीपीएस रहता है उसी का वेपन निकालना ठीक रहता है। So, the reason Alice had us complete the book अबे ये वुआ का मैप was इतना to बड़ा make कर that दिया। magic possible? हाँ वुआ का मैप बहुत ज़्यादा लाइक बड़ा देता है, लेकिन साला रहता नहीं कुछ उसमें, खाली रहता, घास रहता है, पत्थर रहता है, लूट नहीं रहता कुछ। एस्थेटिक है पूरा वुआ का मैप, एस्थेटिक है पूरा, देखने में ठीक लगता है। टिप्स तो थोड़ा, मैं तो न्यू प्लेयर हूँ वुआ में। टिप्स, पहला टिप देखो, तुम जो अपना बैनर खोलोगे ना, बैनर अपना, तो देखना एक रहेगा क्या था, रुको देखने दो, नाम लिखा हुआ था कुछ, देखा था। अरे तुमको तो बताए थे ना भाई हम। जीएक्स भाई तुमको तो बताए थे ना हम, बैनर वाला शोर कीपर निकालने बोले तो तुमको, वही तो बस बैनर के लिए बोला था, तो और क्या चीज़ का टिप दें। सबसे बढ़िया मैप हमको वो न्यू वाला लगा था, ऑगस्टा सिटी वाला। हमको ब्लैक सोर्स बढ़िया लगा था, उसके बाद हमको ये बढ़िया लगा, क्या बोलते हैं, माउंट फर्मामेंट बढ़िया लगा था हमको। होनामी सिटी में तो एक्सप्लोरेशन में कुछ है ही नहीं, सारा कुछ इवेंट में है, तुम घुस के खोजने जाए कुछ मिलेगा नहीं तुमको। बैनर के लिए बोले थे,
अभी तुम क्या कर सकते हो, देखो जो कैरेक्टर तुम निकालोगे वो में, अभी देखो अभी हम तुमको बोलेंगे पता है क्या, शोरकीपर निकालोगे ना, शोरकीपर निकालने के बाद सेकंड हाफ में किसी को पुल मत करना। नेक्स्ट रीजन में तुम्हारा डीपीएस आएगा, ठीक है, 30 आ रहा है, वो सब देखो। डेटा बैंक जानते हो, डेटा बैंक, डेटा बैंक जानते हो, डेटा बैंक भाई सुबह में वुआ का स्ट्रीम किया तो क्या नहीं आया था बताओ, उस समय तो गेम भी खोल कर रखे थे वुआ का, उस समय दिखा भी देते। डेटा बैंक जानते हो कि नहीं जानते हो, डेटा बैंक नहीं जानते हो। सुबह में हम बुआ का स्ट्रीम किए थे भाई, अगर तुम आते ना हम तुमको दिखा देते क्या करना है। अभी हम तुमको गेंशिन में बुआ कहाँ से दिखाएंगे। कल कल देखना, कल बुआ का स्ट्रीम करेंगे, कल देख लेना। कल का बता दो, हम तो बोल रहे कल हम तुमको बता देंगे कब करेगा। अरे सब्सक्राइब कर लो भाई, नोटिफिकेशन आ जाएगा। सुबह में हम स्ट्रीम करते 10 बजे, और शाम में हम कभी कभी स्ट्रीम करते हैं, हमको मन करता है तो, कोई गेम में कुछ करना रहता तो हम करते हैं शाम में स्ट्रीम। जनरली हम सुबह 10 बजे स्ट्रीम करते हैं। डेटा बैंक देखो, अगर तुमको मेन्यू में दिख रहा होगा, डेटा बैंक को तुमको लेवल बढ़ाना होता है, शुरू में वही करना होता है और कुछ नहीं। बाकी एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, जो पुल मिल रहा है उसको बचाओ, खर्च मत करो। शोरकीपर निकाल लो जितना निकालना है शोरकीपर के लिए। बाकी स्टैंडर्ड वाला पुल तुमको तो बता ही थी क्या करना है, बैनर का तुमको तो हम बता दिए थे। बाकी है डेटा बैंक लेवल बढ़ाओ अपना, और क्या बोलते हैं, पुल बचाओ, और 3.0 का वेट करो, 3.0 का वेट करो। 3.0 में जो सपोर्ट आएगा और डीपीएस आएगा उसको निकालना, बता देंगे तुमको। कल आना ना, कल बता देंगे, कल सुबह आ जाना बुआ जब खेलेंगे तो। शोरकीपर का बाहर 42 पीटी है, निकाल लो उसको, उसका वेपन मत निकालना, पहले बोल दे रहे, उसका वेपन मत निकालना। शोरकीपर निकालने के बाद शोरकीपर निकालने के बाद भैया निकाल लेना नीचे वाला बैनर पे, जो हम तुमको बोले थे ना, ब्लू वाला बैनर, जिसमें तुमको लाइक पुल करने के बाद वापस से वो बैनर मिलता तुमको, वरीना वाला। कौन सा बैनर था वो, कौन सा बैनर था, हाँ ये वाला, नोविस कॉन्विन। नोविस कॉन्विन का कंप्लीट करना, उसके बाद तुमको वो वाला कॉन्विन मिलेगा, उससे वरीना सेलेक्ट करना और वरीना निकाल लेना, और कोई मत निकालना। लंथन करेक्टर काम नहीं आएगा, उसे यूज़ भी नहीं करोगे तुम कभी। शोरकीपर वरीना निकालो, उसके बाद एक कैरेक्टर आएगा 3.0 में, मॉर्ने लीने, ये सब ये लोग को निकालना। अभी 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 2.8 तक कोई कैरेक्टर को पुल मत करना, जो भी कैरेक्टर आ रहा कोई काम का नहीं आएगा तुमको, ठीक है। फ्यूचर का देखो, अभी तुम क्या करोगे निकाल के सब, बाद में फिर यूज भी नहीं हो पाएगा। वुआ में इवेंट वगैरह करो, पुल निकालो, फार्म मैप देखो जो करना है, और डेटा बैंक का लेवल बढ़ाना। देखना तुम्हारा मेन्यू जो होता है ना, मेन्यू में एक डेटा बैंक करके चीज़ लिखा हुआ होगा, तो उस डेटा बैंक का लेवल बढ़ाने के लिए तुमको एको फार्म करना होता है, मतलब एको हंट करना होता है। तो अलग अलग एको को मारोगे, डेटा बैंक का लेवल बढ़ेगा तुम्हारा। डेटा बैंक का लेवल बढ़ाओ, ज़्यादा जरूरी हो। A form of magic powerful enough to rewrite fate itself. वापस शुरू किया देखना एनीमे, अरे अभी कहाँ एनीमे देखने चल के। कल रात में घर आए, सूत गए, सुबह उठे, स्ट्रीम किए, स्ट्रीम बंद किए, पढ़ाने गए, आए स्ट्रीम कर रहे। इवेंट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प कर दो, थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है इवेंट में, मेरा इवेंट कर दोगे। देखो इवेंट मेन्यू में जाओ, ठीक है, जो इवेंट में टाइमर लिखा हुआ है उसको पहले करो, जो इवेंट में टाइमर नहीं लिखा हुआ है उसको मत करना, ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट इवेंट है। जो इवेंट में टाइमर लिखा हुआ है उसको करो, और एक होलोग्राम करके होगा इवेंट, उसको करने की जरूरत नहीं, ठीक है।
हॉलोग्राम करके एक इवेंट होगा, उसमें भी टाइमर होगा, लेकिन वो टाइमर गलत है, उसका कोई टाइमर का कोई सीन नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट कंटेंट है। वो उसमें खाली बिना मतलब का टाइमर लिखा हुआ रहता है। तो जो इवेंट में तुम्हारा टाइमर रहता है वो इवेंट को पहले करना, ठीक है, और ट्रायल कैरेक्टर देता है इवेंट में, उसको यूज़ करना। कल बताना इवेंट, हाँ हम कल बता देंगे ब्रो। अरे कल तुम सुबह में आना ना यार, हम तुमको बता देंगे आराम से। वैसे अभी भी तुम देखो, कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं है लेकिन गेंशिन देखो, a form of magic powerful enough to write for itself. Well, we've no time to lose. I just need to take a look at the book. The next part of the story most likely relates to me. So the memory that unlocks it must be connected to me too. Huh? The giant tree was home to a broken branch, the shape of its splintered arm aligning perfectly with the branch that had burst forth from the castle walls. Join yourself to गेंशिन में that सब कुछ कर लिया, broken बस bough, एक्सप्लोर बचा for है। there you may take root at last, गेंशिन and में henceforth bask in the sun गेंशिन में and तुम ओल्ड प्लेयर हो कि rain न्यू of the प्लेयर हो? world beyond the castle. But first, fetch the stickiest clay and let it bind the scar of the break. I see. 2 ईयर से खेल रहा हूँ। अच्छा, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा सब कुछ। अरे तो गेंशिन में देखो, गेंशिन में तुम देखते थे शुरू में जब तुम खेलते थे तुमको 4 स्टार आर्टिफैक्ट मिलता था, फिर तुम्हारा एडवेंचर रैंक तुम बढ़ाते थे, फिर तुम्हारा एडवेंचर रैंक बढ़ने से तुमको डोमेन में 5 स्टार वाला भी खुल गया था, याद है? There he was greeted by a clay figure, a child molded by the sage witch's hands. Though gentle in appearance, he had inherited his mother's cold, sharp wisdom. एक सेकंड, And he was determined to avert the calamity the evil dragon would bring, and so was his helper, none other than the little dragon himself. हाँ तो जैसे तुम्हारा गेंशिन में वो था ना कि तुम अपना एडवेंचर रैंक बढ़ाते थे, उससे तुमको डोमेन का हायर लेवल खुलता था, गोल्ड रिवॉर्ड वाला, गोल्डन आर्टिफैक्ट वाला। तो जो आर्टिफैक्ट गेंशिन में है इधर एको है, ठीक है, ये वुवा में। और वुवा में भी तुमको शुरू में पर्पल वाला और वो सब मिलेगा लेवल का आर्टिफैक्ट, मतलब एको। डेटा बैंक बढ़ाओगे तो फिर तुम्हारा गोल्ड वाला रेरिटी आने का चांस होगा, तो डेटा बैंक इसलिए बढ़ाया जाता है उसमें। उसमें लाइक AR लॉक्ड नहीं है आर्टिफैक्ट का क्वालिटी, डेटा बैंक लॉक्ड है। मतलब AR लॉक्ड भी है, तुमको डेटा बैंक का लेवल बढ़ाने के लिए AR बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन शुरू में तुम जितना डेटा बैंक बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा देना। वो अचानक से तुम्हारा सारा लेवल खुल जाएगा डेटा बैंक का, टेंशन नहीं लेने का, उसमें कुछ है नहीं। जितना तुम एको को हंट, नया नया एको को हंट करना है, एक एक एको को, तो उससे तुम्हारा डेटा बैंक ऐड होते जाता है। डेटा बैंक वही है जो तुम्हारा गेंशिन में था ना, पर्पल से गोल्ड आर्टिफैक्ट तुमको मिलता था, उसी के हिसाब से डेटा बैंक हाई रहेगा तो तुमको गोल्ड वाला ज़्यादा मिलेगा। देखना मेन्यू में लिखा हो रहा था डेटा बैंक करके, वो उसमें क्लिक करोगे तुमको दिख जाएगा। अभी तुमको डेटा बैंक खाली बढ़ाना है उसमें, और इवेंट वगैरह टेम्प्रेरी जो है कर लो उसको, टाइम लिमिटेड, पुल निकाल लो, मैप खेल लो, स्टोरी खेल लो, और उसके बाद बैनर में रहेगा तो पूछ लेना कि ये कैरेक्टर निकालना चाहिए कि नहीं, बता देंगे। कल तो वैसे खेलेंगे हम। एक दिन में कितना फार्म कर सकता हूँ? अनलिमिटेड। डेटा बैंक में तुम जितना भी एको है ना सबको तुम फार्म कर सकते हो, लेकिन डेटा बैंक का लेवल बढ़ाने के लिए तुमको AR बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अरे जैसे कि गेंशिन में नहीं था कि तुम्हारा जब एडवेंचर रैंक 45 होता है, उसके बाद फिर तुमको जितना EXP तुमको मिलता है वो ऐड होते रहता है। फिर तुम जैसे ही उसको असेंड करोगे तुमको जितना EXP ऐड हो रहा था वो तुरंत ऐड हो जाता है और तुमको AR 50 में फेंक देगा या 48 में फेंक देगा, याद है?
45 की सीधे तुमको 48 फेंकता था, क्योंकि तुम उतना दिन से EXP कलेक्ट कर रहे थे और अपना लेवल बढ़ा नहीं रहे थे। अचानक तुम लेवल बढ़ा दिए तो तुम्हारा 48 हो गया अचानक से 45 से, याद है? वैसे ही उसमें अगर तुम डेटा बैंक को पूरा लाइक कर दोगे ना, जितना एको है सब कुछ, उसके बाद फिर तुम बाद में AR बढ़ाओगे ना अपना उसमें, तो फिर तुम डेटा बैंक का लेवल बढ़ेगा और डेटा बैंक तुम्हारा डायरेक्ट उस लेवल तक जाएगा जहाँ तक फिर तुम जा सकते हो उस पर। जैसे अब 15 से 20 जाएगा ऐसे करके, समझ रहे हो? उस तरह से होता है उसमें। वो मैं फर्स्ट टाइम मैंने विजरी मोड ट्राई किया और 9 स्टार के साथ क्लियर कर दिया। इट वाज फर्स्ट टाइम। डैम ब्रो, इस बार तो हमको लगता है बहुत लोग का विजनरी और लूनर मोड खुला हुआ है, क्योंकि क्रायो, पायरो और एनिमो है। मेरा लूनर मोड बिना कुछ कैरेक्टर बिल्ड किए खुला हुआ है, लेकिन क्लियर नहीं होगा क्योंकि कैरेक्टर कोई बिल्ड है ही नहीं। It looks like it's modeled after an alchemist's workshop. किए नहीं अभी तक हम उसको। Or rather, a cliched Nice, stereotype bro. of one. डैम, ये किसका है भाई? साला। Albedo? Hold on. Why do I look like this? Oh, yeah! We forgot to tell you. Basically, the characters in the story are reflections of how Durin sees them. डैम, At least you're still human-shaped. बिल्ली बन के बताओ। Well, since Cat Guy has taken on a different appearance too, that must mean the two of us are both characters in the story. बिल्ली बन के बताओ। But you, Paimon, and Durin haven't changed at all. You must be special figures in some way. I'd like to know more about that too. But seeing as none of them can explain it, let's just concentrate on moving the plot forward. And just like that, the group stumbled upon a hidden passageway. Intricately crafted, Yo, Delvio, it what's up, bro? seemed to lead them towards another exciting chapter of the tale. Damn. Come on! What are we waiting for? Next chapter, here we come! Ouch! But this was a chapter that had not yet been written. Ahead of them was a storyless void, and they could go no further. What? Now what's the point of having a path here? Sounds like a pretty bad habit for a writer. Over here. I found something. What the clay figure found was none other than the evil dragon's heart itself. Though the creature had perished long ago, its heart was still there, pulsing away and growing warmer with every beat. And the clay alchemist knew what it meant. That the evil dragon would return one day, just as the prophecy had foretold. Yet, guided by his mother's wisdom, he foresaw another fate. If only the alchemist could bestow this heart upon the little dragon, he might be reborn in the evil dragon's stead. Only then would the evil dragon's heart grow still, and the little one 107 inherit its tale. Sounds like this chapter's about Albedo bringing me to life? If that really was the solution, though, this would have been over the minute I finished the transmutation. So why is Durin still being forgotten? There has to be some other reason. Yeah, I'd like to explore the area a bit more. Miraculous arcane. Unless the little dragon kept moving, eventually he would be forgotten. Decide what to do next. Damn. Oh भाई, क्या कर रहा है इधर? There you are. ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं 3 दिन तक सोया ही जा रहा हूँ। 3 दिन तक सोया ही रह जाऊँ। उसको हॉस्पिटल जाना बोलते हैं भाई। Oh, hello there. Hey! It's Mini Durin again!
was worried I'd scare everyone off, so I've been hiding out here all this time. You must be really nervous, huh? I guess I am a little nervous, but I'm also excited. I'm gonna get to stop the evil dragon and even become a human. It's all thanks to that clay man. He's the one who talked me into it. कैंटरला ओ कैंटरला का इंतजार में तुम बोल रहे हो पुल उल मत कर देना भाई अभी किसी पे पहले बोल दे रहे हैं And once I'm a human, I'll be able to make loads of friends and do tons of important things. You'll make lots of friends, that's for sure. And go on many unforgettable adventures. I'm so glad to hear it. The only thing is, the clay man said becoming human isn't gonna be easy. पुल तो नहीं So I'm करूँगा feeling a little anxious too. He's right about that. Even if you manage to become a the human, fuck this guy there was will hiding up here always be yeah tougher challenges on the road ahead. you didn't do the quest Really? But even so, your friends will be there to help you. Oh? Then I'm not afraid. Funny, isn't it? After talking to you, I'm not afraid anymore either. So, are you ready now? Yep, I'm ready to become a human. What the clay figure found was none other I than didn't the find this guy. evil I've compared dragon's it heart lol bro itself. Though the creature had perished long ago, its heart was still there, pulsing away and growing warmer with every beat. And the clay alchemist knew what it meant. That the evil dragon would return one day, just as the prophecy had foretold. Yet, guided by his mother's wisdom, he foresaw another fate. If only the alchemist could bestow this heart upon the little dragon, he might be reborn in the evil dragon's stead. Only then would the evil dragon's heart grow still, and the little one inherit its tale. damn At last, the little dragon accepted the evil dragon's heart, and a new life came into being. your favorite story quest The evil Mine dragon's favorite is heart still beat Skurk, in his chest, because and the little dragon's soul guided him forward. it was not that much confusing it was Thus pretty did much the straightforward prophecy hold many unknown true, were there but even as it fate was straightforward had this been is like very rewritten. confusing bro And lot so of was the riddles and little dragon born anew. hinting yo Numan what's up bro Finally, a happy ending. That must be the last step, right? Woohoo! We completed the story. my Furina न्यू विलेट आ रहा है पता है ना Skurk is probably my second one right now after this. I see. Bro, that time Skurk was released, they were like cooking on the drip for her. Drip marketing for Skurk was crazy, bro. Finally, exams are over. Nice, bro. Congrats. Enjoy your post-exam days. Born anew, the little dragon set off once more, his story far from over. Huh? So, that wasn't the end? What comes next might be the most crucial part of all. The real last step. If fate really is as devious as they say, then I say, show us what you've got. Damn. Wow. You're all so serious all of a sudden. The heck? Durin, are you alright? The evil dragon's heart was now one with the little dragon, yet the dark power within it still lingered.
Would the little dragon dare to hold this power back? Or would Albedo he calling him cat simply guy, yeah, instead of give hat in? guy, cat guy. Hey, what kind of question is that? Of course he's gonna control it. What choice does he have? By the way, did you see that Barbeloth reading Paimon's mind video? What's up with the narrator? You know, we can go back to the books after we complete the quest. So someone probably went back to the make a decision quickly. What the hell? Hold back the darkness, give in, return to the castle. Hell no, bro. I will give in. Let the darkness consume the world. The little dragon was at an impasse, and the dark power within him surged like a tide. Unchecked, the darkness engulfed everything around it, including the little dragon's soul. The little dragon's story faded into nothingness, and in the world beyond the castle, only the evil dragon's tale endured. Yeah, Genshin giving choices. Is this me? Lol. And so the story ended, with the little dragon fading from sight, leaving nothing but the evil dragon's shadow in his place. Oh no! That means Durin. What do we do now? Hello, children. If you're hearing this recording, it's because you've reached a certain ending. Itto arm treatment. You may have noticed that little Durin's experiences have been written into the pages of this book. Well, you should know that in the same way, its ending will also be written onto him. So be careful, because triggering a bad ending could be somewhat problematic. Damn. Let me guess. You're upset that I didn't warn you earlier? Don't worry, though. I've thought it all through. I built a very special feature into this book, just for you, the witnesses of this tale. So, go ahead. See if you can turn back the pages. If you're not happy with the ending you've reached, just flip back Rewind a few pages button. and let the tale unfold once more. Pretty incredible, huh? That's the power of magic. Rewinding. I guess I have to return to the castle, right? How do I get the paint? Returning to the castle. I just never thought crossing over into a new world would create so much trouble. All I wanted was to make some friends.
starting to think I kind of miss being in Simulanka. Just do all three, okay? You might look back on it with fondness, but if I were you, I wouldn't miss it. Why? Sometimes, moving on with your life comes at a cost. But that's better than going nowhere at all. You don't have to worry, Durin. No matter what problem you face, there will always be a solution. Okay. Sometimes I wish I could just go back and see it again. As the little dragon slipped back inside the castle's walls, the clamor of the outside world fell away. There was no danger here, no problems for the little dragon to resolve. As soon as his mother finished her story, it was time for the child to drift off into the world of dreams. And so the story ended, with the little dragon fast Bruh, asleep what kind of in his mid-ending is castle, this? just like he had never even hatched. What's going on? I feel so weak. Hey, what's happening? Durin, wake up! But this can't be how it ends. Durin promised to bring back everyone's memories. There's no way he'd accept an ending like this. What did you expect from going back? Yeah. Looks like you've discovered another But there was no possible other ending. choice. I had like 3 Do not inks and lose then hope. the You just fight need back to had keep like searching, 4 ink for there are requirement. possibilities that only you can bring to life. Unless we get like ink from somewhere. One more ink. I need to find one more ink, I guess. Where the hell is one more ink? Ahead of them was a storyless void, and they could go no further. The third one. The little dragon and his companions blank. Huh? What's going on? Are we running out of ink? Once the ink runs out, is that the end of the story? I had a feeling this would happen. What's happening to the others? Time. I really hate that someone toying with us. Yeah. Now that the story's ink was spent, I wanna all see that these lay notes. ahead were blank pages. Well, what in the figurative ending is this? Stop calling me. Looks like you've discovered another possible ending. Do not lose hope. You just need to keep searching, for there are possibilities that only you can bring to life. What the fuck? Why am I flipping back? Why do I have to flip back, bro? What's going on here? Why isn't the story letting Durin just suppress the abyssal power? इसको वीक्स खिलाओ यार. It seems the act of suppressing the power counts as an event in the story. In other words, we would need ink to write it in. So, what now? Did we use too much earlier? How are we supposed to write a happy ending with only this much left? But... Well, this is Durin's story. As long as he's alive and well, why should it end? If there really is such a direct correlation between the story and his fate, I may have a potential hypothesis. Durin was, and still is in essence, a storybook character, written into being by M. From the moment he was born, he has always dwelt within her story, and I suspect that has remained the case, even after his arrival in Tavant. Reviving Durin in the evil dragon's place was an act of grafting this Durin story onto the latter's fate. In essence,
That is how his fate was rewritten. But there is a fundamental difference between a being's story and its fate. As Miss Barbeloth reminded us, the fate of every living being in Teyvat has been woven into the fabric of time. Its most natural path, therefore, is to proceed along its given track. But Durin's story, on the other hand, as Durin's connection to this world wore thin, not only have people started to forget him, he started to lose control of the abyssal power within. In other words, his story can't continue, because the author's ink is drying up. That's what it seems like to me. It would seem the little dragon had made a group of fine friends indeed. Save it. The question is, are you here to help him or stand in his way? This is as far as the story can go. What path will you choose? I choose the path of pain. I suppose the final decision is up to me. It's hard to believe I never actually left my mother's story. If that's true, I'd like to go there and see for myself. यही जगह जाना है और क्या? By there, I take it you mean the blank pages of the unwritten chapter ahead? But we still don't even know how Alice's magic works. If Durin belongs inside the story, then going outside of it to some unwritten part, Embrace the darkness. isn't that too risky? I'm not afraid. I second I'm that. not afraid. It would I'm seem not this afraid is one answer you need to go to seize for take yourself. Everybody. So be it. Whatever obstacles stand in your way, we'll tear them down together. What with your cat claws? Gotta Embrace. keep going. Lies only a storyless void. My consciousness is slipping away. Keep going, Durin. A pure soul is your essence, not an empty void. I feel so weak. Yo, Rajit bhai, what's up? Stand tall, Durin. You are not some amorphous idea. The body I made for you is flesh and bone. Am I truly alive? Yes, Durin, but you must keep going. You're as alive and real as I am. I can't feel a connection. Alberto collection. You're not alone in this world, Durin. At the very least, you have me. Damn. At the very least, you have me. I can't remember anything. Who am I? You're the diddler. Your name is Durin, and there are many who still remember it. My name is Durin. Bruh. You're taking too long. Come on, Durin, run! In this world, fate waits for no one. Diddler of Dragonspine. Wait! Where am I meant to go? What am I supposed to do? Go. Make your wish come true, Durin. My wish?
My wish is to have functional wings. Your story's not over yet. My wish is to have functional wings, which I can use to fly, not just coat wings. Silence, huh? Have you nothing to say about my proposal? Let me get this straight. You want to graft your story onto this unfinished thread of fate, and in doing so, not only rewrite that fate, but allow the story to live on. Yeah. Quite the brilliant idea. Still, the story's survival depends entirely on whether the author keeps writing. Exactly. And the moment foretold by the prophecy is still centuries away. I see. Yeah, man, that society can't actually fly with those wings. I Yeah. thought my own ignorance might be the I problem. was actually thinking maybe after But 5 I'd days asked of quest more they of the will allow noble us to science of use alchemy those than wings it to could fly. ever deliver. Or that I had failed to discern the heavenly signs and grasp the secret truth underlying the prophecy. Little did I imagine that time itself would prove to be the greatest hurdle of all. Well, my friend, this has been a most intriguing experiment. And from an academic perspective, at least, I don't think it was a bad proposal. Someday, the prophecy will come to pass. He can fly, So but we can't. remember, my friend, much like the stars themselves, there will always be something that transcends the test of time. Thank you, everyone. You've helped me so much already. But, Alice, I still have one final favor to ask of you. Will you lend me your magic one last time, just enough for me to keep his story alive until the prophecy is fulfilled? You mean you want me to extend your lifespan? No, not in that sense. As Rheindotter once told me, the laws governing life and death are among the most unyielding in this world. I'm well aware of that. Whether it lasts a day or an age, the span of one's life is determined by fate alone. If I tried to breach that law by force, I'm afraid I would lose what makes me human. This is not a path I want to go down. If I am to die, then I shall die a human. So, what is it that you want me to do? Yeah, she preaching others, but she did not follow that rule. I would like you to send this pen of mine into the future. I see. Then perhaps there really is a way I can help. I could create a kind of story magic to take over the writing once you're gone. Oh, but for it to work, you would need to provide enough of your own words for it to learn from. How much? I've heard magic so many times in this quest. I'm thinking I'm watching fairy tale anime. Oh, an immense amount. So much, in fact, that you would have to spend the rest of your life writing. And even then, I'm sorry to say, it would not last forever. No matter how much you write, there is a limit to the number of words you can leave behind. But the world itself will never stop changing. Someday, perhaps, even your entire corpus will not be enough for the magic to continue describing this world. And when that happens, the story will end. Still, it's worth a try. Oh, my dear Anya. Even after all this time, you're still... Look at you.
You should be enjoying your old age in peace and quiet, especially now that things are finally returning to normal after that terrible calamity. Once he leaves Simulanka, things will only get more complicated. मेरा नाम If मुकेश his है. story is to continue, there needs to be more material for the magic to draw upon. I'll just have to skip over some of the less important details. Anya, why do you insist on sending him out of the storybook world? Why must he face his fate in Teyvat? Why not just let him remain within the story? With my magic, even fate's curse could be undone and he could live happily ever after. I suppose. In fairy tales, all it takes is a heartfelt wish. And even a wooden puppet can turn himself into a real boy and live happily ever after. That's just how fairy tales end, isn't it? But have you ever wondered what happens to the main character after the ever after? Yeah, they start paying taxes. Tell me, Alice, in your eyes, what would be a writer's greatest regret? To leave a story without an ending. Not a bad answer. It's true, many writers come to consider that their greatest regret. But I see things differently. My greatest regret is that every story I write has to come to an end in the first place. Damn. Anya. No matter how brilliantly a character shines, the moment their story ends, their potential is lost forever. For them, the story itself becomes an inescapable fate. But what if, instead, I could place my pen in their hand and let them continue the story themselves? You mean... You said it yourself. I can only leave so many words behind. Even with your magic, the idea that I could keep the story going until the prophecy comes to pass is wishful thinking at best. When we were like giving the gift in that previous day quest, there was a pen there, but we were not allowed to interact with it. I guess he will be picking up that pen now. But I found a way to use your magic to transform some of my finished stories into a special kind of ink. This ink is a magical medium he can use to complete the story the way he wants to. For what is storytelling but another kind of magic? And if he can experience the whole tale himself while leaving behind his own wishes and aspirations, even once he reaches the chapter where I stopped, he'll still be able to carry the story forward on his own. And so, by leaving him this ink, I can entrust him with the responsibility of writing his own story. A character with the power to write their own story. Oh, Aizen. That way, he'll finally be free from the cage that is my pen. And like anyone else living in the real world, he can go on to create a life of his own. And you no longer need to worry about the constraints of my magic. What a brilliant idea, Anya. But there are still risks. First of all, once he arrives in Teyvat, he'll have to rely entirely on the story you left him to maintain his connection to that world. As you gradually hand over creative control,
that connection will grow weaker, and at some point, he might lose it altogether. But at the same time, he'll also have the Right chance to alive is forge crazy, that yeah. connection for himself. The issue is, this method taps into too many of Tivet's core secrets. Any overt hints you try to leave will be erased in no time. Oh, In fact, it'd be hard for you to leave anything at all to guide them. We still have the story itself, though. I can use that to show them the way. It's entirely possible he burns through all your ink, never reaches the chapter you had in mind, and gets stuck, roaming the chapters of his past. But despite all that, I still believe in what this child can become. His hopes and wishes can be his ink, so he won't be trapped by mine running dry. Oh, what the writer you are, Anya. Your imagination never ceases to amaze. And you do know how much I love a happy ending. You shall have my help, my dear. production line. Yeah. Thank you, my friend. Well then, my child, do you understand what you must do? Yes, I think I do. It's my turn to keep this story alive. Then what's holding you back? What will become of you after I take up this pen? I will fade away. There will no longer be a reason for me to go on existing. My child, or your mother, I should say, passed away long ago. Oh yeah. The voice you're hearing is nothing but a magical echo that has now fulfilled its purpose. You needn't feel so reluctant to let me go. I know my mother died long ago. It's just, when you lose your mom too soon, it's hard to tear yourself away from the stories she used to read. I guess it's a silly way of pretending she's still here, by your side. Putting lover so thin. Are you talking about the background music? Durin. But after coming to this world and traveling it with my friends, facing all kinds of enemies together, I suddenly realized I couldn't just sit around listening to my mother's stories because I'd found a new From the purpose golden in apple, life. I see. Maybe this is just what growing up feels like. With all my new friends waiting, it's time I finally set aside my mother's storybook. I'm ready to grow up now, Mom. Then take this. A gift I should have given you a long time ago. You've witnessed this story from the very beginning. Made your wishes, offered your blessings, and even wrote your choices into its pages. From here on out, this pen is yours. Now I ask of you, the other pillar of this story, as both its reader and its witness, will you turn the page so the next chapter can begin? That was like 10 pages. Well, Suddenly, and without warning, the powers of darkness struck. The question was, could the little dragon prevail? of course. Alas, it was here that the story witch's tale had to end. Ether Lore's But Keeper? Durin's Yeah. tale, on the other hand, had only just begun. Stepping into his mother's memories, he picked up her pen. And so the story that was ending began anew. He had made up his mind to challenge the fate that barred the way ahead.
What the hell is that dragon, bro? Looks like this is the final step. A chance to strike back at fate? Now that's not something that comes knocking every day. Bro. But imagine losing aura like this. Being a toy dragon when you were the literal monster who destroyed monster once. No, that fate no longer defines me. In the end, only my story shall endure. Blood does not even have a body. Dodging this one. Here, I'll help lift you up. Of course. You need to get it, then C3 R3. Only my story shall endure. The story has only just begun. C3 R3. C1 during the last position. But yeah, C2 is also position. Looks like there's nowhere to hide. Here, I'll cover for you. यो अली भाई क्या हाल चाल तुम्हारा कर दिए थे हम टावर डेलीज नहीं गए थे लेकिन डेलीज देख लेना Thank you, Mom. And so it was that Durin defeated the darkness and rewrote his fate. But his story is far from over. कहाँ थे दिन भर गायब थे पूरा Is everyone okay? We're fine, thanks. And hey, we all saw how you fought back there. That was awesome. I have to admit, I do feel नेट like खत्म हो something गया in me damn has changed. I owe you all so much. Without your help, did I she don't know if I really could have ever made it this far. did she really say you got a new outfit when the only thing that changed was that headgear bruh Paimon be saying some of the dumbest shit bro
that one piece of like ornament on his hair changed, and she said, "You got a new outfit?" हुआ का ना गेंशिन का किसी का डिलीट नहीं हो पाया. Damn. His heart changed as well. That's like, that's not an outfit change, bro. Still. And tail. Oh, tail also changed. फाइबर का रिचार्ज पता नहीं कराएंगे पापा की नहीं, पता नहीं. अरे तुम्हारा मोबाइल का वाईफाई होगा ना, मोबाइल का वाईफाई से हॉटस्पॉट लेके कर लो डेली. Just a shame I could only help out from the sidelines. Like I said before, it's not every day that you get to put fate in its place. Well, I'm sure you'll hear it someday. Hear what? The chance to strike back at fate knocking at your door. Yeah, maybe someday. Didn't you already get that chance, bro? You rewrote your entire existence. Allow me to just check one thing. Yes. मोबाइल का The रिचार्ज abyssal तुरंत खत्म power हो within you जाएगा. has अरे देखो stabilized again. सुनो, And those strange symptoms you were experiencing seem to have completely disappeared. लैपटॉप में जाना, सेटिंग में जाना, नेटवर्क में जाना, मीटर्ड कनेक्शन ऑन करना. मीटर्ड कनेक्शन ऑफ है तुम्हारा तो समझे. मीटर्ड कनेक्शन ऑन करना. मीटर्ड कनेक्शन ऑन करने के बाद खत्म नहीं होगा. Thank goodness! I wonder what it means, though. Aside from the principles of alchemy, what other law of this world governs his being? क्या बोला भाई? अरे वो जी फोर्स में खोलने वाला ये बोल बहुत लेता है नॉर्मल में दिन में 150 MB में. 150 MB क्या होगा भाई, 2 GB का तो पैक होगा ही. 400 MB बचा है. वेल रिप. Look, it all turned out fine, so just leave it at that. Now that this one's out of तुम्हारा वैसे danger, हम टावर कर दिए थे भाई, it's time for me to get out of here. बता दिए बस. और हम फीवी भी निकाल लिए. मेरा फीवी निकल गई थी. You're leaving so soon? Well, don't humans usually throw a party after something like this? मेरा क्या मेरा? A party? Do I look like that kind of guy? Anyway, come find me again next time you're in trouble. That's what friends are for, right? In a way, though, he is right. This is Durin's moment to celebrate, not the time for डेली academic क्लेम कर दो यार discussions. मेरे अकाउंट पे. Hey, I don't blame you for asking. And honestly, I'd be perfectly happy to पहले talk about it. मेरे It's just, तारीफ में 6 शब्द I लिखो. wouldn't 6 even know where to 6 start. 6 पंक्ति लिखो मेरे तारीफ में, तब हम करेंगे. Don't blame for asking, honestly. I'd be perfectly happy to talk about it. मुझे लगा मेरा नाम लिए हो. It's all right. I'm sure we'll get a chance at some point. After all, your story's only just begun. All right then, Traveler and Paimon, we'll part ways here. Given the extraordinary nature of the things we witnessed today, I need to make sure it's all recorded properly. Okay, see ya! So, it's party time next? Huh? कैसा फोन रिंगटोन है भाई? Congratulations on completing your mission. Now then, as per our agreement, it's about time
dressing it अरे भाई हमको really लगा is a कैरेक्टर निकल गया must मेरा for socializing. फ्री कैरेक्टर ये गेंशिन गेम फ्री कैरेक्टर शिवम भाई आप बहुत अच्छे हो कांग्रेचुलेशन फॉर पी होप आपको सब मिल जाए गुड विशेस अरे थैंक्स ब्रो कर दे रहे डेली तुम्हारा वुवा कर दे रहे ठीक है फ्री कैरेक्टर मिल गया भाई नहीं कोई दिक्कत नहीं चलेगा रिटर्न द बुक टू एलिस एलिस होना चाहिए भाई दो दो को नहीं होना चाहिए पहले बोल रहे हैं एलिस है भाई एलिस है एलिस है Ah, my writer and witness. It's been quite the journey, hasn't it? You had special plans for the traveler from the start, didn't you? नेक्स्ट थिएटर एलिमेंट क्या है शुभम भाई पता नहीं भाई इसका तो हमको पता चला आज मतलब आज नहीं कुछ दिन पहले ये एनिमो है पायरो है क्रायो है नेक्स्ट थिएटर का पता नहीं मोस्टली हाइड्रो होगा जियो होगा और क्या होगा इलेक्ट्रो होगा वही पायरो बोल रहा हूँ हाइड्रो जियो तो होना ही था क्योंकि जीबाई आएगी और कोलम्बिना आएगी तो हाइड्रो जियो तो लिखा हुआ था But of course, that goes without saying. For a story to live on, it needs both a writer and a reader. Only then can my magic take effect. I chose the traveler as the witness because of the special nature of who he is. special nature being Alice's husband that's the special nature It's not easy finding someone with that kind of background, you know. For a moment, I even considered taking the role myself. At least it made for an interesting अबे story, तू क्या कर right? रहा है इधर Huh? What are you doing here, tone-deaf bard? yeah that's what I was thinking With the Hexen Circle carrying out such a risky experiment in Mondstadt, it didn't cross your minds that the Animo Archon might be slightly curious? you ain't call yourself Animo Archon with that outfit bruh this guy calling himself the Animo Archon with that fucking outfit Sorry for the trouble, Lord Barbados. Think nothing of it. I dare say the Animo Archon quite enjoyed coming along for the ride. And now then, as agreed, let us Actual see wife the working? fruits of your labor. bruh smash वेंटी को स्मैश बोल रहे हो भाई छी भाई Here, please take a look. Well. Somehow, despite all my careful planning, it still turned out to be full of surprises. It never even crossed my mind that Rhindotter's child would be capable of handling that kind of alchemy in her stead. When he asked for help with the materials, oh my, I nearly couldn't believe it. एलिस को अच्छा एलिस को तो ठीक है If only the others were here too. We could all celebrate together. I'm right here, you know. The only one who hasn't responded is the one busy stuffing her face over there. Is that you, Barbie? A little late to the party, don't you think? Come here, child. Let me take a closer look at you. Glee older than all of us I mean she's my daughter so she can't be older than me पायरो हाइड्रो इलेक्ट्रो नेक्स्ट भाई हम बोले थे ना पायरो हाइड्रो इलेक्ट्रो है हमें तो हम गैस मारे थे भाई नहीं जियो बोले थे हम शायद गलत बोल दिया थोड़ा सा All right, Aunt Seer Witch. Here I am. पायरो हाइड्रो 6.3 अच्छा शुभम भाई नियरिंग 100 अरे वो तो ऑब्वियसली है भाई Just as I thought. This child's fate does not appear among the stars. Anya has accomplished what almost no one By the way, did you before her check that could. video out about Paimon's fate that Barbiloth was checking? Bruh. Who in their right mind
would be looking at anything else except Alice in this frame. What does that mean? Child, all you need to know is that you're very lucky indeed. Oh. दोनों सही है. चलो. Just like how she was in the story, huh? Tell me, little Durin, what will you do next? I, for one, cannot wait to see how your story unfolds. Wouldn't know. I was too busy staring. Yeah. Well, there's so much I want to do. I'm not even sure where to begin. चैट. तुम्हारा चैट. मुबारक भाई, मुबारक भाई. भिंडी. वेंटी को भिंडी. उसको तो भेंडी बोलते हैं. भेंडी. How about settling your most recent regret? अबे अबे कुछ ज्यादा नजदीक आ गया तुम. Not so fast, tone deaf bard. What exactly did you just tell Durin to do? To make the long overdue wish come true. डीसी देखा. Thank you once again, डीसी Alice. में तो वीडियो भेजा ना वो वाला. वो डोतोरे वाला देखा था. How much time do you have left? I believe these should be my final moments. Just enough time to say goodbye to my dearest friend. This feels like having to say our final goodbyes all over again. I don't like it. Not one bit. I don't know how to respond to that. Strange. You were always such a cheerful figure in my stories. I पीप भी even निकल गया. dubbed you बंदे the रेस गया Merry टीचर. अब मैं Witch, you बोलूंगा. know. अभी आ रहा है 3 दिन में कैंट्रेला का बैनर. ठीक है. उसके बाद फिर किसी से तो हम पूछेंगे कैंट्रेला निकली कि नहीं निकली. और याद रखना, तुम बैनर का लास्ट 7 दिन में बोल रहे थे. हम तुमको बैनर का 21 दिन बोलेंगे. मतलब 21 दिन नहीं, कितने दिन का आ रहा था? 15 दिन का रहता. 15 दिन बोलेंगे हम तुमको. Oh, please. You know नहीं full निकलेगी. well अब it was your क्यों नहीं stories that निकलेगी? first taught अगला me what सवाल. true pain and sadness felt like. अगला सवाल. क्यों नहीं निकलेगी? पहले ही बताओ. Aside from saying goodbye to me, shouldn't you also leave a तुमको few words जरूरत थी for the उसका, तुम child? निकाले. अच्छा. Since the book will be his to continue, why don't you write him a little parting note? मुझे जरूरत नहीं है उसका, तो तुम रो क्यों रहे हो? There's no need. His mother already did that long, long ago. All that remains is for me to convey it on her behalf. तो ये वैसे दिखती थी. My child, these may be the last words I Damn, get she was to kind leave of you. baddie, bro. I've always thought of the characters in my stories as my children, loving each one of them, just like a mother would. But you are the most extraordinary of them all. You alone can defy the fate of this world Wait a and second. write the perfect ending to my story. You alone shall leave these pages Bruh. for a future I will not see. Still I say to you, fly, my sweet child. Just like a forest breeze yearns for the open sky, head into the unknown and seek an adventure to call your own. If you meet a
dragon bright as 1,000 jewels dance through the air together. You are not alone, for this world has accepted your place in it. Do not lose heart. You still have many wishes left to fulfill. कहाँ भेजा है भाई? A long tale awaits you, my love. Let songs and flowers be the ink that fills its pages. Take my pen and use it to continue your story. Bruh. Wait a second. हमको कोई डीएम किया भाई? एनमिटी में ऑनलाइन है क्या? एक सेकंड को चेक करने दो. तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे. अब ऐड आ गया. LIC से मिले बीमे की रकम नहीं, मेरे नए काम की शुरुआत पे मुमकिन बनाया. जल का साथ बन जाता है, घर का साथ LIC आपके साथ. Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. अरे यार. क्या हो गया? अरे एक ये है, क्या बोलते हैं, दोस्त है, मतलब वो भी यूट्यूबर है, उसका कोई डिस्कॉर्ड हैक कर लिया और क्रिप्टो का क्रिप्टो का कुछ स्कैम भेज रहा था. उसका आईडी हैक करके मिस्टर बीस्ट वाला. तो वो अभी सबको बैठ के डिलीट कर रहा है. कंट्रोलर चाहिए मुझे, निकालो भाई. एक और गया. अरे एनमिटी जानता है ना अली भाई? एनमिटी भाई का डिस्कॉर्ड थोड़ा हैक हो गया था.
बहुत अच्छा क्वेस्ट है इसका। तू क्या कर रहा है आंटी यहाँ And so they flew together, पे? Turin and ओह Dvalin, over the skies of Mondstadt. ओह, वहीं पे गया ये, द्वालिन से मिलने गया। Who'd have thought such words could ever have described a happy ending, huh? कहाँ भाई, दिख रहा है क्या उड़ते हुए? बताओ, अगर यहाँ डालता वो उड़ते हुए, कितना बढ़िया लगता। अरे, और बीवी क्या There हाल you चाल? go! Your very own copy of the book. We wouldn't want one of the story's key witnesses to leave empty-handed now, would we? Of course, this copy isn't magical in the same way. But rest assured, all the twists and turns are still there. हम अपना बुआ का पासवर्ड चेंज कर रहे भाई। I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. मैंने इसलिए बीच में बोला था सबको, अरे बुआ में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ही नहीं भाई। बुआ में होना भी तो चाहिए, गेंशिन में है। मुझे लगा डीसी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है मेरा। तो ये अकाउंट में तो हो गया कुछ। कितना पुल है मेरे पास ये अकाउंट में? वन 156, 168, 171 और 180। फिटी कितना है? 3 का फिटी है भाई। सही ठीक है। इतने किधर से पुली कहाँ की है भाई? नेफर स्किप मारे, डोरिन स्किप मारे, लामा पे पुल किए थे, फिर जोंगली पुल किए। और लामा के पहले सितलाली निकाले थे। असली पुल तो ये अकाउंट में, जिसमें हम न्यूविलेट का कॉन्स्टलेशन निकालने वाले हैं। न्यूविलेट और मोविका का। सेव कर क्यों रहे हो? सेव कर रहे हैं ताकि जो कैरेक्टर हमको चाहिए वो निकल जाए। वैसा हमको चाहिए वैसा निकालेंगे। उसके बाद कोलम्बिना, उसके बाद देखा जाएगा। कोलम्बिना वाला पैच में तो पूरा पुल होगा मेरा। कोलम्बिना वाला पैच में खाली पुल ही पुल होगा, मतलब कोई सेविंग नहीं होगा शुरू से लेके अंत तक, बहुत हाफ। इसमें है पूरा इसलिए 32,000। दो 206, 208,
ये तो नहीं मिलेगा। 208 200 231 इसमें और पुल चेक करना। तुम्हारा वो डेलीज कर लेता है, फिर वापस आएंगे इसमें। न्यू ग्रेड आ जाए 300 हो जाएगा। 300 तो कम है ब्रो, और होंगे करना। आई नीड मोर। यहाँ 30 नहीं है, इसको और चाहिए। अरे हमको सीसीस करना है भाई। आई सी ओके ब्रो, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। Yo, nothing, what's up, bro? Welcome to stream. I was doing that Alice quest. Now I'm doing some guys, these guys daily ending stream. No. Why would I end this now? I'm just doing it daily. Alice daily. भाई तुम्हारा अकाउंट में बहुत मुश्किल से हुआ है टावर, याद रखना। बहुत मुश्किल से हुआ है, लास्ट फ्लोर नहीं हो रहा था। कैरेक्टर वगैरह का तेरा बिल्ड ठीक नहीं है। हमको लगता है 1.5-2 घंटा तो तुम्हारा ही अकाउंट में ट्राई किया है हम। बिल्ड वगैरह करो, समझाओ। रोल कहाँ आता? अच्छा लाना होगा भाई, नहीं तो फिर दिक्कत है। मेरा अकाउंट में एक ट्राई में हो गया था। किसका बिल्ड करूं? इसका एचपी बढ़ाओ भाई, 50,000 करो। बाकी सब स्टैट तुम्हारा ठीक है, चलेगा। एचपी बढ़ाओ और इसका लाइक क्रिट डैमेज और क्रिट रेट बढ़ाओ। और तुम्हारा ये जो है ना, तुम्हारा इसका बिल्ड बहुत अच्छा है कैमिलिया का, लेकिन सीआर कम है। कैमिलिया में तुम्हारा बहुत आरएनजी हुआ था भाई, सीआर में गॉड डैम। तो ट्राई नहीं किया। चीसा का लिबरेशन स्टैट्स देखना जरा। चीसा भी बिल्ड सुधारना है तुमको। चीसा का यार बहुत कम है तुम्हारा। चीसा का यार तुम्हारा बहुत कम है।
आरएनजी तुम्हारा कार्टेथिया वाला टीम में हुआ और कैमेलिया वाला टीम में। अरे देखो, मिडिल टावर, अगर मिडिल टावर के लिए टीम दिक्कत है तो फिर दिक्कत होगा, फिर समझ रहे हो ना। मिडिल टावर में ये टीम यूज़ किए थे हम, और कैमिलिया यूज़ किए थे। साइड टावर तो हो जाता है भाई, साइड टावर का कोई इशू है ही नहीं, मिडिल टावर का इशू है जो है। तो फिर क्या निकालो फिर? फिनिश ड्यूरिंग क्वेस्ट, या ड्यूरिंग क्वेस्ट है फिनिश। अरे मैं चैट देख नहीं रहा था क्या, अचानक से प्रकट हुआ भाई चैट। ऑगस्टा चाहिए मुझे लगता है। ऑगस्टा निकालोगे तो बिना यूनो के मत निकालना भाई, पहले बोल दे रहा। देखो भाई, जो भी निकालोगे समझ के निकालना, बस हम यही बोलेंगे। ऑगस्टा विथ सिग्नेचर एंड विथ यूनो। तुमको तुमको टीम मिडिल टावर के लिए निकालना है, और किसी के लिए निकालना है? हम बताए क्या निकालें? हम तो तुमको बताया था भाई, तुम तो फिर कुछ और ही कर दिया है। बोले थे कैंटोला फुलवा निकालने के लिए तुमको। चलो फिर भी तुम्हारा कैमेलिया तो कर दे रही है अभी, जब नहीं करेगी तब दिक्कत होगा। कैमेलिया का बिल्ड तुम सुधारो, थोड़ा क्रिट रेट बढ़ाओ, क्रिट डैमेज सुधारो। ब्रांड बोले थे तुम, हाँ ब्रांड निकालना भाई। भाई तुम ब्रांड निकालना भाई, पहले बोल दे रहा हूँ, नहीं तो फिर इसका और इसका निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है अगर तुम ब्रांड नहीं निकालेगा। समझे? मॉर्ने निकाल लेना, ठीक है, मॉर्ने निकाल लेना, उसके बाद ब्रांड निकाल लेना। और अगर ऑगस्टा के लिए जा रहे हो तो वेपन के साथ निकालना, कम से कम वेपन के साथ निकालना अगर ऑगस्टा के लिए जा रहे हो तो। विदाउट वेपन ऑगस्टा बॉदर भी मत करना बिल्ड करने का। मॉर्ने और अगस्ता प्लान है C0R1, ठीक है। बाकी देखो क्या होता है। अभी तो तुम कैंटेला पुल करोगे ना। अच्छा, एनवीटी भाई लाइव बंद कर दिया क्या? एक सेकंड।
गेम ऑडियो आ रहा है। बस अगर वुआ जिता दो तो चांस है कि पीटी रीच होगा कैंडल है मेरे पर। बहुत कम पुल है भाई। तुम्हारे पास अभी कितना पुल है? तुम्हारे पास अभी कितना पुल है? तीस पीटी 10 पुल। साला तुमको पुल कहाँ से मिला? अच्छा तुम तो मैप पे एक्सप्लोर नहीं किया भाई। अरे हम स्टिकर ऐड कर सकते हैं क्या अपना चैनल में? देखते हैं, क्या पता स्टिकर ऐड हो सके। बैजेज एनिमेजी इमोजी। अरे यार अभी और चाहिए तब ऐड होगा। वाओ, अभी और चाहिए तब ऐड होगा। यही जगह तो एक्सप्लोर करना था। यूट्यूब मोनिस्टाड मोनिस्टाड। Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. ये वाला चीज़ तो हम ले लिए चलती है। फिर कहाँ जाना है? इधर जाना है। इधर जाना है। हाँ इधर जाना है। चलो बाय। ओके ब्रो, बाय बाय। समझो अब क्या समझे? ईस्ट ईस्ट जाना है। चलो
अबे इधर चेस्ट था ना, ले लिए थे क्या? ले लिए थे क्या? Next to the cliff. Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worthwhile Bye, Ali. Bye. experience. Good night. मतलब बफर क्यों कर रहा है तुम्हारा? हाई पिंक क्यों होता है? Pyroclastic surge! Full throttle! Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worthwhile experience. ये हो गया. Nice. Behind the crates. What crates? Behind what crates? Okay, these crates. Okay. Light it up! What a pleasant surprise! Truly an extra slice of joy. Okay, this one's done. Light all braziers in 30 seconds. Which one? Okay, it's this time trial challenge. Okay. Bow your head. Planning on pulling Z-Buy? Rise with the sun! I mean, Full throttle! if I get pulls, I will definitely. Something to add I to my might collection. need some godly luck to get Z-Buy as well. Otherwise, I won't have enough pulls. I need some godly luck, bro. Your voice is too low, and my mic is pretty high, I think. Yeah, I was saying I might need some like insane luck to get Z-Buy as well, because I am going to pull Veresa, then Columbina. By the time I get to Z-Buy, if I have like pulls left, I don't know if I'll get her. I will definitely pull on her banner. What is this ping today? Yeah, I also don't know, bro. This ping is crazy. Crazy ping. You're pulling for Valesa? Yeah, I'm going to pull Veresa and then Columbina and then Z-Buy. By the time I get to her, I don't know how many pulls I will have left. I had City 350 yesterday, but now it is fine.
But this is because I'm playing on this account. I think if I switch to other account, the ping will be lower. I don't know why some accounts have like higher ping. It always happens. Genshin traders account, yeah. I think on my main account I will have good thing. Rise with the sun! Hey, not a bad haul. I used to think that all of the monster common chests did not have primogems, but some common chests which are found on this side have primogems. But no luck for me, there are people getting early every time while winning. I mean, it's always some days where you win and then rest of the days where you lose. Like I had like such bad luck in Nightland, bro. I got Sitlali in 180 pulls, and then before that I got like Instead of confining I themselves to think the I heavens, lost God should broaden their horizons in the on world below. Sitlali and then Mavika, and then I think Zillion was also guaranteed. Fight the Mutachal. Where the hell is the Mutachal, bro? Have you muted these notes? Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Oh, there. This guy. There. Light of the blazing sun! May I present? Something to add to my collection. Bro, these guys always turn off the fire, bro. Next to the rock, bro. Right here. Boring! Isn't there anything else more interesting to do? What a pleasant surprise! Truly an extra slice of joy. Fight the slimes towards the north. At this chest. Light it up! Pyroclastic surge! Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. Settle down! Okay. This one is done.
Fight the Cryomage. Yeah, I already did that. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. Hey, not a bad haul. Okay, I did this one. I think 30 chests left in this region because it says 191. I'm at 161. How much collected in this account? Yeah, currently I'm at 33,000. 206, 208. I can't get this. And then 231. Fight the animo slimes. North. Okay. That's it. What? There should be some animo slimes here. Bruh. Did I already get this one? Yeah, I think I already got this one. Nice. Bro, this is like only event and all that. I have saved since like Mavika banner. Mavika, I got C1 and weapon. Like one Mavika copy and one weapon copy. After that, I haven't pulled any character. This is just from event and all that. And also from like Natlan exploration. I think in this account, my Natlan is complete. Yeah. My Natlan exploration is complete in this account. And Nordcry also. Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Glide in the middle of the wind current. Okay. Hey, not a bad haul. Not a bad hole. What? Hall. Yeah, hall, not hole. Okay, bro. Good night. Thanks for joining. Bye bye. Exploration and trials. Break the rock pile and fight the geostorm. Adventuring is right up my alley. Bruh, what rock pile?
I already got it. Yeah, I already got it. $30. The rewards of an adventure worth remembering. Teleport to the waypoint. Okay. North side. North. Yeah, this side. Something to add to my collection. Breath from the sky! Rev the engines! Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Abandoned property belongs to whoever finds it first, so it's legally yours now. Next to the cliff. Abandoned property belongs. Bow your head. Shoot the 4 animal slams waiting around the tree. Okay. Full throttle! Where? Up there.
lie veiled within this desolate plain. At the bottom of the cliff. Okay. What trinkets lie veiled within this desolate plain? Teleport. Inside the broken cart. Okay. What trinkets lie veiled within this desolate plain? Reveal thyself! In which server you are? I'm on Asia, bro. So much less speed. I mean, it's account issue, bro. On my main account, I get like good internet, but yeah, on this account, I'm kind of cooked. फार्मिंग चालू है, हाँ फार्मिंग कर ले रहे हैं. ये वाला जगह भाई बहुत दिन से अटका हुआ है ना, दो तीन दिन हो गया उसको ख़त्म कर रहे हैं. Yeah, on my main account I have like good internet, but on this account it's cooked. Fight the ruin guard. I think I fought that ruin guard, and I've also taken that chest. Yeah, I've already taken that chest. Let us fight it again. Silence! Yeah, the internet is cooked right now for this account. Behind the wall. Oh, there's hiding in plain sight. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. Legally yours now. On the side of the cliff. East direction, okay. That side. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. Mint picking. Break the rocks and follow the ceiling. Yeah, this one.
record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. Bro, where's the silly? आज क्या कर रहे हो? एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर। चला एकदम ऊपर में। नहीं, इधर से उधर तो दिख रहा। हम तो शांति से मॉकटेल पी रहे हैं। वाह भाई, फ्लेक्स मार रहे हो भाई। कुछ देर में खाना भी खाएंगे। वाह भाई, फ्लेक्स मारो। Destiny has brought me hither. मैं खाना बना रहा हूँ। डैम। What trinkets lie veiled within this desolate plain? Bing, bing, bing. Do-do-do-do-do. Oh, what's that over there? आज तो हल्का बनाऊंगा। ये ले पैर क्या तो हल्का ऑमलेट। ये ले लिया। रियल है। I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin de ये तो हम ले लिए थे। ये भी ले लिए थे। फाइट द मॉब। कौन सा मॉब? ये वाला मॉब। अच्छा,
property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. तो 10 गो चीज बचा हुआ है. एक सेकेंड. Next to the tree. एक सेकेंड. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Settle down! कौन सा ट्री? अच्छा इधर. Is it what you bow your head? Rise with the sun! Strike a pose! Settle down! ये वाला भी हो गया. Follow the ceiling with ceiling. अरे कौन सा ceiling? क्या ऊपर में? Silence! Shine no longer. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, कहाँ it's teleport legally करें? yours now. तो इधर. सीधे इधर. Fight the Helichur. What Helichur? कहाँ चढ़ रहा है भाई ये? Try and stop me! Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. ये बहुत दूर जाना है यार. सारा इतनी दूर.
Settle down. Be sanctified. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. Shrine of Depth. Damn. यार खोपचे में Shrine of Depth है. Good night, Mubarak bhai. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. Fight the Metachal. Okay, Meta did not. Bow your head. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. ये वाला भी हो गया. On the rocks at sea. Okay. Okay. अबे इधर तो कुछ नहीं है. तो इधर से हम ले लिए थे. शायद हम ले ली. अच्छा ये वही आइस ब्रिज वाला रास्ता है ना, उधर जाना है. उधर तो आइलैंड है. मोटन फिश सब है. अरे भाई काहे तुम जला रहा हमको. Use Kaya skill to create an ice path to the secret island. Wow. जलाती तुम हमको. Strike a pose! बताओ भाई मटन खा रहा है अकेले के लिए. Okay, bro.
Full throttle! अभी ये ले भी था क्या? Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Dig next to the stones. यहाँ पे dig. Hey, not a bad haul. Dig कर this on the beach. Beach में तो कुछ नहीं है. Dig next to the broken wall. चलो इधर भी dig कर देते हैं. Something to add to my collection. In front of the pillar का तो ले लिया. Hole in the wall. ये भी ले लिया है. खत्म. Damn. Nice. हो गया इस. Damn, nice. ऐसे इधर एक डोमेन भी था ना. इसको क्लियर करता. पायरो. चल भाई पायरो.
Let the mighty be humbled. Settle down. Burn it down! Rev the engines! इसको कैसे जलाया जाएगा? Light it up! चलो हमको ले जाने लगा आर्चर को। आर्चर लेके आना होगा। Outrider Amber, reporting. No rest for the wicked. Showing you praise. हाँ बेटा हमको लगा कुछ चेस्ट मिलेगा इसमें, सारा कुछ था ही नहीं। I'll race you there. Damn.
Anytime, any place. चलो ये वाला भी कर ही लेते हैं। ये वाला भी कर ही लेते हैं। Okay. कौन दे रहा है भाई? As you wish, mein Fräulein. Settle down. अब उधर चेस्ट है भाई। Try and stop me! Try and stop me! Burn it down! अच्छा ये बारिश हो रहा है। Light it up!
ये वाला भी हो गया। नाइस। ये जगह 100 हो गया ना। नेक्स्ट कौन सा करना चाहिए? स्टारफेल वैली तो हो गया मेरा। ब्राइट क्राउन माउंटेन्स। अच्छा, मतलब अपडेटेड वीडियोस है ये सब। ब्राइट क्राउन माउंटेन में कितना है? 128 चेस्ट है। आइलैंड में 104 है। इसमें कितना है? 86 है। डैम। जाना नहीं है भाई को लगता है। गेलसोंग हिल और विंडवेल आइलैंड दोनों हो जाएगा एक दिन में या 2 दिन में, इधर साइड और इधर साइड। अरे ये वाला कर लेते क्या? कहाँ गया? सुक्रोज को तो इनवाइट करना। skip. Whoa! This is way too many, but considering that seeing it in person is such. Why, if it isn't Cutie and Paimon? Let me guess. You miss. Might you both? Imagine what there are books of. I'm sorting all that to. I would treat you. Don't worry. You're a. Damn. How long is this going to take? Finally! What even? What's this one? The little witch's. Yoo-hoo! Looking for me? Alice? What? Have you ever splendid? Oh, namely that. Well, rather. Besides, so I gathered that. Well, striving toward a common goal. Now, I never said. Wait. Much better to. Besides, it's not like this is a bad thing. Just. Okay. We'll take the dig. Wonderful. So now we can invite her. Yeah.
To invite sucrose. I'm Sucrose, a researcher of alchemy. I heard you've been to a lot of places, so I was wondering if you... What am I saying? It's only our first time meeting. I shouldn't trouble you. Damn. Well. अरे यार फ्लावर नहीं यार अब इसके लिए फ्लावर इकट्ठा करना होगा क्या ये तो क्या है? Collectible item है तो। ये वो जीएस ब्रो सब खाना वगैरह खा ली कि नहीं सब हो गया और तुम्हारा सब हो गया नाइस मेरा अरे हम तो ऐसे ही Oh, you finished sorting already? Now then,
What would you like? Oh, that's all. Not to mention. Unless. Actually, Trouble? Besides, better for them to. Anyway. मेरे पास अभी यही दो है। ऑफिशियल को 70 करना। न्यूवी कितना डैमेज देता है? अच्छा खासा डैमेज देता तो। मेरा तो लाइक बिल्ड भी अच्छा है, अच्छा खासा डैमेज आ जाता है। My build is kind of good. Yo. मेरा भी कर दिया था क्या डेलीज? नहीं अभी नहीं किया, करना है क्या? तो ये आईडी में एक्सप्लोर कर रहे थे भाई। क्या मैंने गलत देखा? क्या देख लिया भाई? ऐसे एक आइलैंड किया था एक्सप्लोर। एक आइलैंड या मतलब एक पार्ट, स्टारफिल वैली। हाँ कर देना। हाँ ठीक कर दे रहे। सीडी नहीं, सीडी है उतना 309 और सीडी जाएगा। कम है सीडी, 350 हो सकता है सीडी, बट फिर सीआर मेन कॉस्ट लगाना पड़ेगा। ये वाला एक्सप्लोर कर रहे थे, स्टारफेल वैली तो हो गया, अब बाकी करेंगे। हाइड्रो ड्रैगन फॉर रीजन। अरे तुम आ ही गए हो तो तुमको दिखा भी देते हो वाला बुआ में। पहले इसका डेलीज कर लेते फिर दिखा देंगे। नेफर भी टेस्ट करके देख लेना। मेरा कोकोमी नेफर नहीं डाला हुआ, प्रीमियम। नेफर का जो नया टीम है ना कोलंबिना में, उसमें नहीदा और कोलंबिना दोनों पे प्रो टाइप एम्बर। लॉल क्विजी। एक सेकेंड। मॉन्स्टर में बहुत कम पुल है भाई, ज़्यादा पुल नहीं रहता मॉन्स्टर में, बहुत कम पुल। इसको फार्म कर दे रहे हैं, लामा कोलंबिना वाला मटेरियल है। गेंशिन में क्या करना? आईडी लॉगिन। गेंशिन आईडी लॉगिन कैसे करेंगे भाई? इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगता है ना ब्रो।
हम तुमको हुआ का बता दे रहे हैं। और गेंशिन में है कि नहीं न्यू इवेंट बिल्ड देख लो। बिल्ड 50 to 72 वाओ 50 to 72 तो बहुत बढ़िया है भाई। 763 EM बढ़िया पीस है। सही है बिल्ड। EM बढ़ सकता है बट ठीक है काम हो जाएगा। टैलेंट कितना है? अरे ये दोनों को 10 करो भाई। छोड़ो अभी मत करना, अभी कोलम्बिना के लिए बचा के रखो। इसको भी बढ़ा सकता है, इसका डैमेज है अच्छा खासा। लावा है इसलिए 781 दिखा रहा है। बिल्ड तो ठीक है भाई, बिल्ड में कोई दिक्कत नहीं है। जो है सो टैलेंट वगैरह कर लो और क्या। अभी कोलम्बिना का मटेरियल भी यही वाला है इसलिए हम करने नहीं बोल रहे। कोलम्बिना का भी यही वाला मटेरियल। TTDS दिया है इसको लावा को TTDS दिया है। सेट कौन सा है? इंस्ट्रक्टर है इसमें। डीपोड है, सही है। नाइस। हो गया। मेरे पास बुक्स की कमी है, मेरे पास भी है बुक है ही नहीं होगा। साला बुक फार्म करेगी, आर्टिफैक्ट फार्म करेगी। 3 को मिला भाई।
उसका DDS क्यों दिया है? उसे तो अटैक बफ मिलता और नेफर को EM चाहिए, लेकिन तुम और क्या ही दे सकते हो वेपन में? तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है? तुम ऐसा कोई वेपन दे सकते हो क्या जो कि EM देगा उसको, नेफर को? तुम कोकोमी को ऐसा कोई वेपन पकड़ा ही सकते हो, बताओ, जो कि उसको EM देगा? प्रो टाइप दे दो, प्रो टाइप एम्बर। लेकिन प्रो टाइप एम्बर का जो बेसिक किट है वो तो अल्ट बेस्ड है, और कोकोमी ऑन फील्ड अल्ट यूज़र है। प्रो टाइप एम्बर का जो बेसिक किट है वो अल्ट पे बेस्ड है। उससे बेटर तो नाहिदा पे है वो प्रो टाइप एम्बर। कोई काम का है नहीं ऐसा। कौन सा टैलेंट डोमेन करना चाहिए वैसे? टैलेंट डोमेन में लावा का क्या है? गरीब है भाई, और कोई अच्छा नहीं है। हाँ, प्रो टाइप एम्बर से बना नहीं है भाई, और कोई काम नहीं आएगा। इसका कर देते हैं, इसका भी कर देते हैं, तो उसी में है। इसका कर देते हैं, 3 में मिल गया। सबसे पहले इसका। टिंग 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 टिंग। Settle down. Time to shine! Suffer the wrath of Ainsley! Merciless. Another star goes out! Silence. Show no mercy! Strike a blow! Fearless. Fulfill our pact! Let the world collide! Be strong! You two! Time to end! The force! Settle down. गेंशिन में न्यू टीम आया है, क्या करता? न्यू टीम कौन सा न्यू टीम? This is all getting rather dreary. Darling. Silence. Ow! A little touch. टीम यूज कर रहा हूँ तो बहुत पुराना टीम है, It is डुअल time DPS to टीम है। slay our foes. Settle down. Show no mercy! This calls for a Hogman ceremony. Paradise shift! Good lord. I've lost Keeping your my lines. place. Where were we? Bow your head.
Settle down. Our performance has yet to conclude. Let the mighty be humble. I dance for you, my dear. Silence. Strike a blow! Fulfill our Let us dance, my dearest. Try to remember the steps this time. Oops. I thought I had it memorized. और क्या था? नेटालैंड लावा के लिए क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस में? गेंशिन में फार्म करो भाई। अगर तुम्हारा लाइक मैप में बचा हुआ है कुछ। अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक बैनर आ रहा है। You are but another fool. Chasing illusionals. Let the mountain's veins boil! Light it up! Robin, eat Papa, get him! I'm going in! Wrath from the sky! Incinerate! Hear the echoes of the valley! Teamwork is dreamwork! Suffer the wrath of the East Wing! Pyroclastic surge! Full throttle! कल से शुरू करूँगा तो हाँ वैसे भी अभी तो टाइम भी नहीं है उसको करने का। Turn it down! Let's light it up! Everybody stand! Lolene, eat Papa, get him! Wrath from the sky! अरे भाई देखो ना क्या है उसमें बच्चा Let the... Bring it! Pyroclastic surge! Try and stop me! ब्रांड लूपा चांगली और जानी एसके फीबी का रोटेशन बताना इजी। ब्रांड लूपा चांगली देखो लूपा ब्रांड को बफ करती है, ब्रांड चांगली को, चांगली लूपा को। तो चालू होगा रोटेशन लूपा से। लूपा का तुमको अल्ट मारना है, मतलब सबसे पहले लूपा का तुमको स्किल 2 बार करना है, उसके बाद फिर तुमको अल्ट करना है। अल्ट करने के बाद तुमको बेसिक अटैक स्पैम करना है जब तक तुम्हारा रेड वाला स्किल नहीं आता है। जैसे रेड वाला स्किल आएगा रेड वाला स्किल प्रेस कर देना है। आउटर करना है ब्रांड पे। ब्रांड का आउटरो के बाद जैसे ब्रांड इंट्रो होगा ब्रांड का अल्ट मार देना है, उसका स्किल स्पैम करना है और फिर तब तक स्पैम करना है जब तक उसका स्किल का बटन वापस से, मतलब जब तक ब्रांड ज़मीन में नहीं आ जाता, ठीक है। और फिर वापस से तुमको उसका स्किल रिफ्रेश करना होगा। फिर तुमको उसका एंकर वाला स्किल प्रेस करना है, आउटरो करना है चांगली पे। चांगली का तो पता ही है तुमको। फिर चांगली का इंट्रो तुमको लूपा को देना।
समझ लो कि वही करना है तुमको, लूपा से ब्रांड जाना है, फिर ब्रांड से चांगली जाना है, चांगली से लूपा जाना है, फिर वही करना है रिपीट। जानी एस के फीबी, सबसे पहले फीबी का तुमको ब्लू वाला स्किल होल्ड करना है, उसके बाद तुरंत शोरकीपर का चार्ज करना है तुमको इंट्रो। जैसे ही शोरकीपर का कंसर्टो चार्ज हो जाएगा, फीबी पे जाना है, वापस अल्ट मारना है, स्किल होल्ड करना है, मतलब स्किल टैप करना है, बेसिक अटैक 3 करके हैवी अटैक 2 बार करना है, फिर आउटरो देना जानी को, जानी का इंट्रो हो जाएगा। फिर उसके बाद तुमको जानी का बेसिक अटैक स्पैम करना है, स्किल प्रेस करना है, फोटे भरना है, फोटे भरने के बाद हैवी स्पेशल वाला स्किल करना है, अल्ट करना है, एको करना है, और फिर ख़त्म, मारते रहो धूमधाम। और अगस्ता का रोटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें तुमको लो ईआर और हाई ईआर रोटेशन है। लाइक 120 ईआर पे उसका रोटेशन चालू होता है अल्ट से। एग्जाम्पल के लिए दिखा दो बस, इसका ख़त्म होकर अपना अकाउंट में जाएंगे ना, दिखा देंगे। मुझे तो चीसा और फीबी दोनों 11 बोल में मिल गया था। टेम, हमको आज फीबी मिल गया, अभी अपना अकाउंट में दिखा देंगे। हो गया ना डेलीस, एक और वीकली है ये वाला। अबे तू किया नहीं है उसको? जानी अभी निकाल सकता हूँ क्या? अच्छी है क्या? देखो अभी स्पेक्ट्रो डीपीएस आ रहा है न्यू रीजन में, तो उसी को निकालना। मॉर्नी निकालना, जो एक आ रही है ना लाल आँख वाली, उसको निकालना, और फिर लीने को निकाल लेना, काम हो जाएगा। नया स्पेक्ट्रो डीपीएस तो आ रहा है। Afraid? Or do you not even have the courage to be afraid? With these rising flames, go in! You two! Time to end them! Wrath from the skies! Now that's more like it. कितना रहेगा With the भाई इसका? fall डैमेज of ज़्यादा हो darkness, गया। destruction shall rise. Have a taste of purgatory. No mercy! Everybody stand back! Spare your energy. Running is of little use. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Suffer the Not wrath of bad. the Eastling! You've proven to be a worthy opponent after all. Rev the end. अरे वाह, न्यू एक कैरेक्टर है ना मूवी का जैसा, वो मुझे अच्छी लगती है। क्या नाम का है? एलिस, प्यारले तीनों। My blade is all that remains. Hear the echoes of the valley! Let's light it up! Why do they never... Let's light it up! Everybody stand back! Lalin, Ispapa, get him! Light of the blazing sun! Suntown is only the beginning. Full throttle. आर्ले तीनों का बात कर रहा था। ओह डैम, नाइस।
चलो इसका डेलीज हो गया। कंटेंट्स बना देते हैं। दो तो है कैरेक्टर, एक तुम्हारा आर्लेचिनो है, मोविका है न्यू में, और कौन है? एलिस का बात करो क्या? Add Astro. Thank you for complete. चैट देखो, अरे वाह एक न्यू कैरेक्टर है ना मोविका जैसी, वह मुझे अच्छी लगती है। का नाम क्या है? मोविका जैसी। एलिस का बात कर रहे हो? कौन सा न्यू कैरेक्टर है? ऑगस्टा का बात कर रहे हो? वुवा में बोल रहे हो क्या? वुवा में ऑगस्टा का बात कर रहे हो क्या? Add Astro. तो लगता है तुम अवस्था का ही बात कर रहे हो। डेली अरे नहीं, वह जो वुआ में नहीं आने वाला। अच्छा लीने, हाँ तो वो स्पेक्ट्रो डीपीएस है, जानी के जैसा। स्पेक्ट्रो डीपीएस है वो। चलो वुआ में दिखाई देते हैं। तार कहाँ है यार? जिंसी का बेटी, जिंसी का बेटी दूसरा, जिंसी का बेटी तो मॉर्ने है। जिंसी का बेटी तो मॉर्ने है, वो तो फ्यूजन हीलर है। फ्यूजन हीलर है वो। सोर कीपर जैसा है वो, न्यू रीजन का। मेरा ही अकाउंट नहीं है, अगर नहीं मेरा अकाउंट में है। किसका अकाउंट में आ गया भाई?
ये मेरा काम था। वो है क्या GX अभी चैट में? चीसा का प्ले स्टाइल बताना। चीसा का बता रहा हूँ। चीसा का ट्रायल होगा ना अभी। देखो भाई तुमको करना क्या है बता दे। देखो ये देख डेटा बैंक लिखा हुआ है। डेटा बैंक है ना, डेटा बैंक में क्लिक करना। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा लेवल तुम्हारा डेटा बैंक का कितना है, ठीक है। अब तुमको करना क्या है, तुमको यहाँ जाना है, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, तुमको यहाँ जाना है। यहाँ पे तुमको जो एको दिख रहा ना, जितना भी है, तुमको कुछ कुछ दिखेगा XX करके, मतलब नाम लिखा हुआ नहीं रहेगा उसमें, और फोटो भी नहीं रहेगा, मतलब वो एको तुमको अभी तक मिला नहीं है गेम में, ठीक है। वो एको तुमको खोजना है, और वो एको जब तुम खोज लोगे उसके बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो साइड में EXP है 10, 10, 15, 20, और रेयरिटी तुम्हारा 2, 3, 4, 5 करना है, दिख रहा है साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में देखो स्क्रीन का जहाँ पे नाम लिखा हुआ है राइट साइड में, वहाँ पे देखो EXP लिखा हुआ है 10, 10, 15, 20, और ऊपर लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5। तो तुमको वो एको को तब तक हंट करते रहना है, मतलब खोज खोज के मारते रहना है जब तक 20 नहीं हो जाता है वो। जब तक 20 नहीं हो जाता तुमको वो एको को खोज खोज के मारना है। जैसे ही वो 20 हो जाएगा तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, अगला एको पे चल जाना, फिर अगला एको के लिए वही करना, ऐसे करते करते सारा एको के लिए कर देना, जितना एको है यहाँ पे, समझे। तुम्हारा डेटा बैंक लेवल बढ़ जाएगा। और अगर डेटा बैंक लेवल तुम्हारा लाइक अटक गया है, मान लो जैसे तुम 20 लेवल पे कर दिए, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारा कुछ यूनियन लेवल का खेला है, मतलब एडवेंचर रैंक का। तुम्हारा एडवेंचर रैंक के ऊपर वो लॉक्ड है, तुम बढ़ाओगे तो अपने आप बढ़ जाएगा, और वो अचानक से पूरा 5-6 लेवल बढ़ जाएगा, तो उसका टेंशन मतलब वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्वेस्ट वगैरह करते रहना। क्वेस्ट मेन्यू तो देखे ही होगे तुम, क्वेस्ट मेन्यू करो अपना, क्वेस्ट वगैरह, मैप एक्सप्लोर करो, और कोई कैरेक्टर वगैरह पुल करना हो तो एक बार पूछ लेना, उससे फिर तुम्हारा फ़ायदा होगा। अगर मान लो कोई सपोर्ट तुम निकालोगे तो उसका DPS क्या होगा बता देंगे। चीसा और फीबी का एको कौन सा है? फीबी मूनलाइट पे बिल्ड होती है। अगर तुम फीबी खेलना चाहते हो तो फिर जानी निकालना होगा तुमको, क्योंकि जानी का सपोर्ट है वो। और अगर तुमको स्पेक्ट्रो DPS चाहिए विदाउट जानी तो तुम लीने निकाल लो और फीबी को एज इट इज़ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहने दो। और चीसा का तुम्हारा यहाँ पे है सेट, ये ब्लैक सोर्स है, ब्लैक सोर्स में ये जगह है, क्रोनोलिफ्ट मेट्रोपोलिस, ये वाला सेट है चीसा का, ये वाला सेट है। थ्रेड ऑफ सेवर्ड फेट, ये 3 पीस है, 3 पीस सेट चीसा का ये, मतलब जैसे हम लोग का गेंशिन में क्या होता है, 5 स्लॉट रहता है आर्टिफैक्ट का, और सेट बोनस 4 का रहता है, ठीक है। मतलब तुम एक ऑफ पेज डालते हो, ठीक है, लेकिन इसमें है कि 5 स्लॉट है और 3 पीस है ये, मतलब ये 3 गो रहेगा इसका, और किसी दूसरे सेट का 2 पीस रहेगा, मोस्टली तुम्हारा ये सेट का। अरे नहीं, कहाँ गया ये वाला सेट का। ये वाला हैवक इक्लिप्स 2 पीस, देखो इसका हैवक डैमेज देता है बोनस, तो ये रहेगा 2 पीस इसका, और वो सेट का 3 पीस रहेगा। उसको बिल्ड कैसे करूँ, मतलब एको कौन सा देना है, ठीक है, बता दे रहे।
ये जगह देख रहे हो, सेप्टिमोंट, सेप्टिमोंट देख रहे हो, सेप्टिमोंट में ये जगह देख रहे हो, ये वाला सिंडर नाइट अपोकलिप्स, ये बॉस है, ठीक है। ये बॉस तुमको फार्म करना होगा, उसके लिए इसका एको तुमको लेना पड़ेगा और इसका टैलेंट मटेरियल तुमको लेना पड़ेगा। टैलेंट मटेरियल ये बेसिकली वीकली बॉस है ये, जैसे हम लोग गेंशिन में वीकली बॉस होता है ना, गेंशिन में हम लोग का वीकली बॉस होता है, ये वुवा का वीकली बॉस है। तो इसका तुमको टैलेंट मटेरियल लेना पड़ेगा और इसका तुमको एको लेना पड़ेगा। जब तुम इसको मारोगे तुमको इसका एको मिलेगा, ठीक है। तो तुमको यही करना है, तुमको इसको फार्म करना है। तुम मेरे वर्ल्ड में आ जाओ, थोड़ा हेल्प कर दो। वर्ल्ड में क्या हेल्प करना बताओ। ये बॉस तक पहुंचने के लिए तुमको बहुत जाम होगा, क्योंकि तुमको क्वेस्ट वगैरह करना होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं अभी तुम आराम से खेलो भाई, जो एक्सप्लोर वगैरह कर दो। हाँ, हम बता दिए बस तुमको कि ये तुमको फार्म करना है। ऑगस्टा का रोटेशन बताना बेसिक में, ऑगस्टा का रोटेशन यहाँ बता देते टावर में। अभी हम बोल रहे ना, तुम अभी तुम आराम से बिल्ड करो भाई, कोई टेंशन नहीं है। ये बॉस नल्ला बॉस है, इसमें बताता हूँ। ऑगस्टा में 120 ER होना चाहिए कम से कम। टेस्टिकल भर के खाना खा लिया, क्या बोल रहा है? टेस्टिकल भर के खाना खा ली। अरे भाई, चीसा का इवेंट अनलॉक नहीं हो रहा है, वो क्वेस्ट से होता है, तुमको मेन क्वेस्ट करना पड़ेगा तब जाके होगा वो। मेन क्वेस्ट करोगे तब होगा, अभी टाइम लगेगा ब्रो। वो परमानेंट इवेंट है, वो टेम्पररी नहीं है, वो कभी जाएगा नहीं। मेन क्वेस्ट करोगे ना तो वो तुम्हारा अनलॉक होगा। वो परमानेंट इवेंट है ब्रो, कहीं जाने वाला नहीं है वो। उसका कुछ कुछ रिवॉर्ड टेम्पररी है, लेकिन हम तो तुमको बोलेंगे आराम से खेलो, उसके चक्कर में मत रहो अभी, वो इवेंट के चक्कर में। क्योंकि वो इवेंट तुमको वहाँ तक पहुँचने के लिए तुमको सारा क्वेस्ट वगैरह करना होगा, बिना तुम क्वेस्ट किए उसको पहुँच नहीं सकते। होनामी सिटी का क्वेस्ट स्टार्टिंग करेंगे अगस्त का पर्पल अर्थ से। स्टोरकीपर के पास जाएंगे, स्टोरकीपर का एंट्री प्राप्त करेंगे। स्टोरकीपर का आउट करेंगे, अगस्ता में जाएंगे, अगस्ता का हेवी अटैक करेंगे, यूनो में जाएंगे, यूनो का आउट कर देंगे और 2 बार स्किल करेंगे। यूनो का जंप बटन प्रेस करेंगे, 2 बार स्किल करेंगे, फोटो करेंगे, हेवी अटैक करेंगे, आउटरो करेंगे अगस्ता में, फिर हेवी अटैक करेंगे, फिर अगस्ता का स्किल प्रेस करेंगे, फिर ऑरेंज वर्ल्ड प्रेस करेंगे। ये करेंगे, वापस से पर्पल लाइट आ गया, पर्पल लाइट प्रेस करेंगे, ये करेंगे, वापस से यही रिपीट, फिर से स्टोरकीपर में जाएंगे, फिर अगस्ता हेवी अटैक, इसका 2 बार स्किल करेंगे, आउट करेंगे, रचनाएं बढ़ेगा। गेम साउंड कम कर देगा।
साउंड नहीं आ रहा। ले भाई, म्यूजिक वॉल्यूम कम कर दे रहा है क्या? गेम साउंड तो ठीक है, म्यूजिक वॉल्यूम ख़त्म कर दे रहा है। मेन तो म्यूजिक का ही वॉल्यूम होगा। मास्टर कम करो, 69 पे आ रहा है। चैट साउंड नहीं आ रहा है। और कौन सा चैट है? मतलब मेन क्वेस्ट, एक रात में सारे क्वेस्ट खत्म हो सकते हैं। भाई तुम क्यों अपने आप को उस तरह का टॉर्चर दिला रहे हो भाई? उसके बाद तुम गेम अनइंस्टॉल कर दोगे, पता है? उतना झेलने के बाद हड़बड़ा मत भाई। 1200 ही जैम है, 1200 जैम ऐसे भी चल जाता है लोग का। कुछ नहीं आ रहा है भाई, फाइट का साउंड आ रहा है, म्यूजिक का भी आ रहा है। मतलब बाकी साउंड ज़्यादा आ रहा है, तो उसका भी कम कर दिया जाओ। अब तो ठीक है ना? देखो, शुरुआत अगस्ता कार्ड से करना होगा ताकि डैमेज लॉस ना हो। अगस्ता कार्ड से शुरुआत करो, शोर कीपर में जाओ, शोर कीपर का कंसर्टो बिल्ड करो। अल्ट करो, अगस्ता में वापस जाओ इंट्रो करके। जैसे ही अगस्ता का इंट्रो करोगे, देखो उसका फोटे भर गया है। हमेशा इंट्रो करने पे फोटे भर जाता है, और उसको खाली करना है तुमको हैवी अटैक करके। हैवी अटैक करके छोड़ना है तुमको, मतलब हैवी अटैक प्रेस करके रिलीज़ करना है। प्रेस किए, मतलब हम थोड़ा गलती कर दिए, ठीक है? यही करना है हमेशा, हैवी अटैक प्रेस करके रिलीज़ करना है। तो करना क्या है, ये करना है। देखो, अगस्ता का अल्ट से शुरुआत करना है। शोर कीपर का तुमको चार्ज करना है कंसर्टो। चार्ज हो गया, अगस्ता पे इंट्रो करना है, हैवी अटैक करना है, रिलीज़ करना है। यूनो पे जाना, यूनो का स्किल 2 बार प्रेस करना है, एको प्रेस करना, अल्ट करना है। फिर जंप करना है, जैसे जंप बटन ग्रीन हो जाएगा, जंप बटन ग्रीन होगा, जंप कर देना है। फिर उसके बाद हैवी अटैक करके अगस्ता पे वापस जाना है, हैवी अटैक करना है। देखो अभी अगस्ता का स्किल पर्पल हो गया, उसको कर देना है पूरा। फिर ऑरेंज अल्ट करना है तुमको, होल्ड करके। ऑरेंज अल्ट होल्ड करके होता है, टैप करने से पर्पल अल्ट होता है। हम पर्पल अल्ट पहले ही कर दिए क्योंकि मेरा चार्ज हो गया था। ये करना है, उसके बाद ये करना है। मतलब हम तो वापस शोर कीपर पे जाते हैं। अल्ट नहीं है अगस्ता का, अल्ट नहीं है, अल्ट नहीं है मतलब शुरू में इवेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो अल्ट नहीं है तो उसको तुम ये करो, अगर अल्ट नहीं है तो ये वाला करना है। स्किल प्रेस करना है, एनिमी आते ही हैवी अटैक करना है, शोर कीपर में जाना है, ठीक है? फिर शोर कीपर का कंसर्टो चार्ज करना है, शोर कीपर का अल्ट करना है,
कंसर्टो चार्ज करने के बाद इंट्रो जाना अगस्ता पे, फिर से तुमको हैवी अटैक करना है और यूनो पे जाना है, इसका लिबरेशन करना है 2 बार स्किल प्रेस करने के बाद। उसके बाद जैसे ही फोटे भर जाएगा जंप करना है, हैवी अटैक करना है और वापस अगस्ता पे जाना है, हैवी अटैक करना है, अगस्ता का पर्पल अल्ट कर दो, उसके बाद फिर ये वाला कर दो स्किल वाला, फिर वापस से हैवी अटैक कर दो, ऑरेंज अल्ट करो होल्ड करके, होल्ड करना होता है ऑरेंज अल्ट को, याद रखना, टैप से नहीं होगा वो। फिर शोरकीपर का सुपर इंट्रो कर दो, फिर वापस शोरकीपर का, और जब तक शोरकीपर का आउट्रो नहीं आता है स्वैप नहीं करना है, नहीं तो फिर अगस्ता का डैमेज नहीं आएगा। शोरकीपर का आउट्रो आएगा फिर स्वैप करो, फिर हैवी अटैक में जाओ, फिर यूनो पे जाओ, यूनो का डबल स्किल करो, उसके बाद अल्ट करो, एको करो, जैसे ही फोटे भर जाएगा यूनो का जंप अटैक करो, जंप करो, स्किल करो स्पैम, बेसिक अटैक स्पैम, कंचर्टो भर गया, हैवी अटैक करो, ऑगस्टा पे जाओ, ऑगस्टा का हैवी करो, अल्ट करो, रेजोनेंस स्किल करो, पर्पल अल्ट आएगा, पर्पल अल्ट प्रेस कर दो। ये फोटे क्या होता है फोटे होता है हेल्थ बार के ऊपर वाला बार, हेल्थ बार के ऊपर वाला जो बार होता है उसको फोटे बोलते हैं। और कौन सा टीम बोला था? चीसा, चीसा बोला था ना। ये टीम बोला था क्या तुम? जानी फीबी का बोला था ना, जानी फीबी का रोटेशन। फीबी, उसके बाद शोरकीपर, उसके बाद जानी। फीबी का जो ब्लू स्किल है ना, इसको होल्ड करना है स्टार्ट करते के साथ। ब्लू स्किल होल्ड करो, शोरकीपर में जाओ, शोरकीपर का ये करो, फोर्टे बिल्ड करो, मतलब कंचर्टो सर्कल जो है उसको बिल्ड करो, आउट्रो करो सीधे फीबी पे वापस, स्किल टैप करके अल्ट करो, उसके बाद 3 बेसिक 1 हैवी, 3 बेसिक 1 हैवी, हैवी हेरोन करके जानी पे जाओ, जानी का एको प्रेस करो, स्किल प्रेस करो, जानी का स्किल जब चमकने लगेगा ये कर दो, और क्या। उसके बाद फाइनली ये प्रेस कर दो। भाई गजब कम डैमेज आता है भाई विदाउट सिग्नेचर साला सिग्नेचर नहीं है भाई, वही रिपीट होगा वापस। फिर से इसका स्किल टैप करो, अल्ट करो, हमेशा ब्लू वाला होल्ड करना। चलो सिग्नेचर 2 रोटेशन मर गई होती अभी तक।
फिर भी हो ही गया लगभग। अभी भी है क्या कि नहीं है? और कौन सा टीम था? अभी तो फिलहाल एक ही टीम का मेन है, अगस्ता वाला। चीसा का रोटेशन था ना, चीसा का रोटेशन में यही करना होता है। चीसा का सबसे पहले अल्ट प्रेस कर देना, उसके बाद फिर बेसिक अटैक स्पैम करना जब तक फोर्टे नहीं भर जाता। फोर्टे भरने के बाद चीसा का स्किल प्रेस करना, उसके बाद स्किल को स्पैम करना, और कुछ नहीं, मतलब स्किल नहीं, बेसिक अटैक। जैसे ये करना, सबसे पहले ये करना, उसके बाद ये बेसिक स्पैम करो। जैसे स्किल आ जाएगा रेड वाला, रेड वाला प्रेस करो, उसके बाद बेसिक स्पैम करो वापस। अब ये हो गया, वापस से अब इधर जाओ, आउटरो करो। कार्टेथिया में जाओ, यही करना होता और कुछ नहीं। स्टार्टिंग कर दो चीज़ा का अल्ट के साथ हमेशा। जान ही नहीं है मेरे पास। अरे वो पूछ रहा था, हर्ष पूछ रहा था। इवेंट कर रहे थे, हाँ इवेंट में अल्ट नहीं दिया ना। अच्छा इवेंट में अल्ट नहीं दिया ना चीज़ा का, तब तुमको थोड़ा जाम होगा, तब तुमको हो गया। फॉलो किया गया रोटेशन लास्ट वाला, जानी वाला हो गया, जानी और ब्रांड वाला। ब्रांड मेरे पास नहीं है, लेकिन करना वही है तुमको। लूपा का आउटरो देना है इसको, चांगली को, चांगली का आउटरो तुमको देना है, सॉरी लूपा का आउटरो तुमको ब्रांड को देना है, ब्रांड का आउटरो चांगली को देना है, चांगली का आउटरो लूपा को देना है। सर्कल चलता है उसका, सर्कल चलता है उसका। और जानी वाला टीम में तुमको हमेशा फीबी का ब्लू वाला हैवी अटैक करना है। ब्लू वाला जब भी आएगा हैवी अटैक उस पर प्रेस करके कर देना, मतलब चार्ज अटैक फीबी पे। जानी वो सब पहले ही कर लिए थे, हाँ तब ठीक है। चला इसका वेपन नहीं है, इसका डैमेज नहीं आ रहा जब तुम बताया था। ये जो है ना इसका, ये ब्लू वाला, उसको ये टुंग करो, उसके बाद फिर जो करना है करो। शोर कीपर से इस पे जाना, उसके बाद फिर इस पे जाना। वीडियो दिया है, देखना जरा क्या वीडियो है भाई। डीसी पर ये रोटेशन ठीक है। तुम ट्रायल वाला में रोटेशन क्यों कर रहे हो? ट्रायल में तो कंसर्टो शुरू से भर के देता है तुमको। ट्रायल में तो कंसर्टो शुरू से भर के देता है भाई तुमको। ट्रायल वाला रोटेशन मत देखो। रियल गेम में तुमको कंसर्टो भरा, कंसर्टो मतलब ये जो हेल्थ बार के लेफ्ट साइड में सर्कल दिख रहा है तुमको, हेल्थ बार के लेफ्ट साइड में वो वाला है कंसर्टो, वो भरा हुआ रहता है ट्रायल में। वो तुमको रियल गेम, मतलब रियल बोल रहा है, मेन गेम में तुमको भरा हुआ नहीं मिलेगा हमेशा। ट्रायल वर्जन में रोटेशन ठीक नहीं होता है, ट्रायल वर्जन का रोटेशन ठीक नहीं है।
रोटेशन ऐसे गेम में प्रैक्टिस करो। देखो ये देख रहे हो, ये जो है ना सर्कल बगल में, अभी हम फाइट करेंगे ना, देखना सर्कल को नोटिस करना, नोटिस करना सर्कल को क्या होता है। देखना 0 स्टार्ट होगा, इसमें 0 स्टार्ट होता है हमेशा। सर्कल जब जैसे ही भर जाएगा ना, मेरा स्वैप आता है मेन वाला। नहीं मतलब हमेशा नहीं, ऐसे हम जनरल बोल रहे हैं। देखना अब ये क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले फीबी का स्किल को होल्ड करना है, शोर कीपर में जाना है, शोर कीपर का एको वगैरह सारा कर देना है। फिर उसके बाद अल्ट करना है। देखना अभी सर्कल भर गया होगा शोर कीपर का, वापस फीबी में जाएंगे, देखा स्टाइल मार के एंट्री मारी ना। जब भी सर्कल भरेगा ना, अगला कैरेक्टर हमेशा स्टाइल मार के एंट्री मारेगा। स्किल करके अल्ट करो, 3 बेसिक 1 हैवी। फिर देखो सर्कल भर गया था इसका, दूसरा कैरेक्टर स्टाइल मार के एंट्री मारा। वापस फीबी का हमेशा ब्लू वाला कर दो, हैवी अटैक, ताकि तुम्हारा बार बार झाम ना हो। फिर अल्ट, देखो सर्कल भर गया इसका, स्टाइल मार के एंट्री होगा। स्किल प्रेस करो, अल्ट करो, देखो इसका भी सर्कल भर रहा है। 3 हैवी 3 बेसिक 1 हैवी, 3 बेसिक 1 हैवी, सर्कल भर गया। कौवा, एको, स्किल, अब इसका अल्ट क्यों नहीं आ रहा। चीसा का रोटेशन, चीसा में देखिए रोटेशन बैक कर कार्डिया के साथ बनाना, रोवर के जगह कैसे यूज़ करना। अच्छा चीसा का रोटेशन ना, देखो बता दे रहा, फीबी सपोर्ट है या फिर डीपीएस सपोर्ट है। तुम उसको डीपीएस रन करोगे तुमको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा, उसका डीपीएस उतना अच्छा नहीं है। सपोर्ट है वो, जानी का सपोर्ट है वो। अगर तुमको फीबी लेके खेलना है तो हम बोलेंगे जानी निकालो, फिर जानी का वेपन भी निकालो। अगर तुमको चीसा लेके खेलना है तो काटेथिया और चकोना निकालो। देखो जैसे यही वाला टीम है ना, इसका रोटेशन का स्टार्टिंग में करते क्या हम लोग, जो स्टार्टिंग में है दोनों में सेम है। तुमको इसका रोटेशन का स्टार्टिंग में क्या करता है, पहले अल्ट करता है, हवा में स्वैप करके प्लंज करता है, फिर ये जाता है, फिर इसका अल्ट करता है। उसमें भी वही करना है, तुमको इसका अल्ट की जगह चीसा का अल्ट करना है। फिर जैसे ही तुम चीसा का अल्ट करेगा, चीसा का तुमको बेसिक अटैक मिलेगा 4 गो। चौथा बेसिक अटैक के बाद वो कैंची बनाती है, देखना कैंची बनाती है, उस स्क्रीन पे ऐसे करके कैंची आता है वो। जैसे ही कैंची बनाएगी ना, इस पे चल जाना, और इसका या तो तुम ये करो, ये जो ये करती है ऐसे,
या तो तुम सिंपल स्किप करके ऐसे जंप करके ये वाला करो, जल्दी होता है इससे। उतना करने की जगह जंप करके ये वाला करेगा, जल्दी होता है। ये इतना लंबा करती है, इसकी जगह ये जंप करे करो, जल्दी होता है। तो ये 2 बार कर देना जैसे वो कैंची बनाएगी। उसके बाद वापस उसमें जाना, इस पे चीसा पे, चीसा का रेड वाला एक्टिवेट हो गया होगा, रेड वाला क्लिक करना ऐसे। उसके बाद फिर बेसिक अटैक स्पैम करना। जैसे ही तुम बेसिक अटैक स्पैम करोगे ना, देखना चीसा का आउटरो आ जाएगा। काट इस पे जाना, चकोना पे हैवी अटैक करना, स्केल करना, अल्ट करना, इसका भी आउटरो आ जाएगा। काटेथिया पे जाना, काटेथिया का 3-4 बेसिक करना, स्केल करना, अल्ट करना, यही करना। भाई भूत का चड्डी दिख रहा है भाई। कैंसल होता है वो डीमन गर्ल का जंप करके भी, कैंसल होता है वो भी डीमन गर्ल का। डीमन गर्ल ये चकोना कैंसल होता है वो भी डीमन गर्ल का जंप करके भी। सही है। ये वाला बोल रहा हूँ। तो इसमें जल्दी हो रहा ना कंपेयर टू ये वाला, इससे तो जल्दी ही हो रहा है। और जब सेकंड बार जंप करती है ना, वो मेन होता है इसका। जैसे तुम ये किया ना, ये मेन नहीं है, ये वाला मेन है। ये जो बनाई ना, ये भूत बनाना मेन होता है इसके लिए। जब तक ये भूत नहीं बनेगा, फोर्टे तुमको नहीं मिलेगा एक। और तुम सेकंड वाला जंप को तुम स्वैप कर सकता है। पहला वाला जंप किया, सर सेकंड वाला जंप, मतलब नहीं गलती हो गया, पहला वाला जंप किया, अब यहाँ स्वैप कर दो। हाँ, और जल्दी होगा जंप में अगर कैंसिल कर देगा तो। क्या कैंसिल? कैंसिल मतलब समझे नहीं। ये ऐसे किया है, स्वैप करेगा तो फिर तो कैंसिल, मतलब स्वैप करेगा तो तुमको फोर्टे नहीं मिलेगा। ये लो, सही फोर्टे है अभी। ऐसे किया, यहाँ पे तुमको स्वैप करना है। जब वो सेकंड जंप के लिए उठती है ना, तब तुमको स्वैप करना है। दो या तीन के बाद, 2 या 3 के बाद जंप के बाद, 2 या 3 के बाद शिफ्ट जंप के बाद। जब तुम स्वैप कर रहा उस टाइम शिफ्ट दबाओ। अच्छा, अच्छा समझ गया तुम क्या बोल रहा। मतलब जब वो सेकंड जंप के लिए इनिशिएट करती है, तब तुम ये कर दो ना। हाँ, वो तो है। बेसिकली तुम उस एनिमेशन को कैंसिल कर सकता, लेकिन तुम बेसिकली स्वैप करेगा कैरेक्टर दूसरा में तो फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर तुम ये कर सकता है, दूसरा कैरेक्टर का सेटअप कर सकता है जब वो ऊपर से कूद के आ रही है। IQ का न्यू मॉडल टेस्ट किया मैंने, तगड़ा गेम प्ले हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्या? तो इसका रोटेशन वैसा ही रहता, बस खाली तुमको शुरुआत का सेम रहेगा, बाकी जो है वो तुमको वो करना है। जैसे इसमें क्या है, इसमें दिखा देता। जहाँ पे रोवर कार्ट है वहाँ पे सेम चीज़ा कार्ट रहेगा, बस खाली एक चीज़ चेंज हो जाता है उसमें। कैंची वाला एनिमेशन जो है, ये वाला करता है ना, ये किया उसके बाद ये किया, उसके बाद ये, यहाँ पे चीसा कार्ट होगा, लेकिन फिर तुम बेसिक अटैक करके कैंची का एनिमेशन में जाएगा।
बेसिक अटैक का कैंची का एनिमेशन जैसे जाएगा, इस पे जाके तुमको जंप करके ये करना है। फिर तुमको वापस चीसा में जाना है, चीसा का रेड वाला स्किल प्रेस करना है, फिर तुमको रेड स्पैम बेसिक अटैक स्पैम करके इसमें जाना है, फिर तुमको इसमें जाना है, यही करना है। आईडी में चीसा नहीं है क्या? नहीं, चीसा नहीं निकाले थे हम, फी भी निकाले थे हम। पेरे पेरे पे सियाकोना से चीसा पर जाना है। हाँ, जैसे कि तुम ये वाला किया था ना, मतलब ये किया, उसके बाद फिर ये किया, उसके बाद फिर इसका अल्ट किया, फिर इसका अल्ट करने के बाद मतलब मैंने चीसा का अल्ट किया, फिर चीसा का तुमको बेसिक 4 करना है। जैसे ही तुम 4 को बेसिक करेगा ना, कैंची का एनिमेशन आएगा एक, देखना कैंची बनाती है वो सामने को और वो पीछे जाती है, तो उस समय तुमको उसी एनिमेशन के टाइम तुमको स्वैप करके ये वाला करना है। और जैसे ये हो जाएगा, वापस तुमको चीसा में जाना है और फिर तुमको स्किल प्रेस करके बेसिक अटैक स्पैम करना है जब तक कंसर्टो फुल ना हो जाए। फिर तुमको इस पे जाना है, इसका हैवी अटैक करना है, इसका स्किल करके इसका अल्ट करना है, फिर तुमको इसका भी कंसर्टो मिल जाएगा, फिर तुमको इस पे इंट्रो करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, समझे? यही करना है। दो लोग देख रहे हैं, 0 वाचिंग दिखा रहा है। यूट्यूब का नशा है भाई वो सब। अरे इसमें पता है हम एक कर सकते हैं, कंसर्टो खाली कर देंगे सारा, उसके बाद दिखा सकते हैं हम इसमें। इसका रोटेशन लंबा रोवर से, फिर रोवर में एयर टाइम मिलता है ना, तो तुमको रोवर का बिल्डअप साथ में होता है चियाकोना का, लेकिन इसमें तुमको अलग से करना पड़ता है चियाकोना का, क्योंकि इसको एयर टाइम है ही नहीं इसके पास है ना। ऐसे कर सकते हैं क्या, पहले सारा खर्च कर दे रहे हैं। हाँ, अब देखना, ऐसे ये किए हैं, ये किए हैं, ये कर दिए हैं, उसके बाद देखो कैंची वाला एनिमेशन आएगा, आया आया, इस पे चल जाओ, या तो तुम पूरा लंबा वाला करो, या तो तुम ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दो। उसके बाद फिर देखो ये स्किल आ गया, स्किल के बाद बेसिक स्पैम करो, जैसे बेसिक स्पैम करोगे ना, इसका ये आ जाता है लाइक आउटरो, हैवी अटैक करो, स्किल करो, इसका ये करो। इतना में मरिए गया ये लोग भाई, साला ये लोग टैंक ही देता ही नहीं है। और फिर इतना करने के बाद तुमको इस पे जाना है। इसका रोटेशन लंबा है पर इसका डैमेज भी रोवर से थोड़ा ज़्यादा है, तो मैनेज हो जाता है मुश्किल से। पता है रोवर से 10% बढ़िया डैमेज है ये टीम का, रोवर से। बस खाली पता है कैरी क्या करेगा, लाइक अगर टावर में कुछ बफ आया ना जो कि हैवक बेन के हिसाब से काम करे, जैसे टावर में दे दिया कि अगर एनिमी में हैवक बेन है तो डैमेज टेकन इज़ मोर, तो फिर रोवर का डैमेज से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसका बिल्ड भी बताना, बिल्ड ये वाला एको तुमको देना है उसको, कहाँ गया? टेन परसेंट बहुत है भाई, नहीं है बहुत, 10% इस गेम का बहुत कम है, क्योंकि इस गेम में एचपी इन्फ्लेटेड नहीं है भाई। इस गेम में ओवरऑल टीम का डीपीएस उतना जाता ही नहीं है। 10% कितना होगा, 100 की होगा भाई, 100 के डीपीएस ज़्यादा मिलेगा तुमको। हाँ, डीपीएस नहीं मतलब डैमेज, 100 के, या मैक्सिमम तुमको 120 के मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा टीम का डैमेज बहुत बढ़िया है ना, तब तुमको मिलेगा उतना। ये वाला एको तुमको फार्म करना है, टैलेंट के लिए भी और मतलब एको के लिए भी। टॉप स्लॉट में यही वाला एको रहेगा, सिंडर नाइट अपोकलिप्स। और तुम्हारा बाकी दोनों जो रहेगा वो यहाँ का रहेगा, ये वाला का। इससे तुम्हारा 3 पीस बन जाएगा, वो वाला एको के साथ और ये वाला के साथ तुम्हारा 3 पीस बन जाएगा उससे।
अब बचा तुम्हारा 2 पीस, तो तुमको 2 पीस में तुमको हैवक सेट देना है, कैमिलिया वाला स्टैट। वो वाला एको में तो तुम्हारे पास कौन सा वेपन है, उसका सिग्नेचर है चीसा का? तुम्हारे पास चीसा का सिग्नेचर है? CR CD और बाकी कितना मेंटेन करो? CR CD चीसा पे सिग्नेचर नहीं है। चीसा पे सिग्नेचर होने के बाद लाइक 80 to 80 मेंटेन हो जाता है CR CD में। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिग्नेचर नहीं है तो फिर नहीं, सिग्नेचर मत निकालो, बेकार है भाई, बेकार है सिग्नेचर। सिग्नेचर मिला के हम 10% बोले थे, और सिग्नेचर बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, किसी और पे काम नहीं करेगा वो वेपन, किसी और पे काम नहीं करेगा। और हाँ, क्या बोल रहे थे? सिग्नेचर नहीं तुम्हारे पास तो ये वाला वेपन दे देना उसको, ये वाला वेपन। कहाँ गया ये वाला? लस्ट्रस रेजर, लिबरेशन डैमेज बोनस मिलता है चीसा को, काम है उसका लिबरेशन डैमेज बोनस का। अबे तो चीसा किस काम का है मतलब? अच्छा, चीसा किस काम का है? मर्द नहीं है, पहला काम है उसका। दूसरा बात, हैवक बेन है, हैवक बेन का कोई DPS आएगा तो उसमें काम आएगी वो। अभी चीसा के लिए कोई DPS नहीं है ना, मान लो तुम्हारा फ्यूचर में कोई डॉट कैरेक्टर लाया हैवक बेन का, तो उसके लिए चीसा बेस्ट इन स्लॉट रहेगी उसका टीम में। जितना भी डॉट का DPS आएगा ना फ्यूचर में, डॉट टीम्स के लिए चीसा, डॉट टीम्स के लिए डैमेज ओवर टाइम वाला। स्पेक्ट्रो फ्रैजल का टीम हो गया, उसके बाद एरो इरोजन का हो गया, हैवक बेन, अरे ये उसका हैवक बेन है ना चीसा का। चीसा जो अप्लाई करती है रेड वाला, वो क्या है? हैवक बेन है वो। CR CD अगर वेपन है तुम्हारे पास तो CR80 CD 280 चल जाता है, और नहीं है वेपन तो फिर तुम्हारा कितना जाएगा? CR70 CD 250 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और तुमको देना है उसको डबल हैवक, और अटैक देना है तुमको 1 कॉस्ट में। सबस्टैट में तुमको CR CD देना है, हैवक पेन नाम रखता है, नहीं बेन है, बेन है। और सबस्टैट में तुमको CR CD देना है, लिबरेशन देना है तुमको, लिबरेशन %, और अटैक परसेंटेज देना है तुमको 120 CR रखते हुए। 120 से कम मत रखना, नहीं तो फिर रोटेशन बहुत ख़राब होगा। 120 से कम रहेगा, रोटेशन बहुत ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा ख़राब। 120 CR रखना, CR CD वही मेंटेन करना, कितना 60 से 70 के बीच में CR रखना, और 240 से 250 के बीच में CD रखना। अटैक जितना दे सकते हो उतना रखना, ER 120 रखना, और लिबरेशन डैमेज बोनस 3 पीस जिसमें टॉप स्लॉट रहेगा वो वाला नया वाला फ्लर दिलीज बॉस का, और अटैक परसेंटेज 1 कॉस्ट। यही रहेगा। क्या आता है? हाँ, हम भी जा रहे हैं। आज रात खेल कर 40 पुल निकालूंगा। अरे आराम कर लो भाई, कोई हड़बड़ी नहीं है 40 पुल निकालने का, आराम से खेलो भाई। ये सब गेम हड़बड़ा खेलोगे ना, कल दिन अनइंस्टॉल मार दोगे, क्योंकि ये सब गेम लाइक ऐसा गेम नहीं है जो कि तुमको तुरंत सब कुछ दे देगा। आराम से खेलो भाई, सो जाओ, मत खेलो आज। कल सुबह उठ के खेलना आराम से। और तुमको कुछ पूछना था क्या? दो ईयर से खेल रहा हूँ, अब आदत सा हो गया है। आदत सा होने से नहीं होता है ब्रो, बोर हो जाओगे खेलते खेलते। और कुछ पूछना है क्या तुमको? नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, तब हम भी मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।